just, I don't know how the visibility is right now for you. For me, it's doing just fine. Okay. Okay. So shall we proceed, sir? Yes, absolutely. Please first let me know, is anyone in the audience who doesn't understand Urdu? So क्या हमारे पास कोई audience outside international है जो अभी उर्दू understand नहीं करती है? Is there anyone who can't understand Urdu? If there is anyone, write it down in the chat so that we would know how our audience is. Is there someone who can't understand Urdu? So probably not. Okay, that's fine. So I apologize. Sorry. Yeah, मेरे ख्याल में फिर उर्दू और इंग्लिश के दरमियान स्विच कर लेंगे as appropriate. So firstly मुझे पता लगा कि फंक्शन जो था वो ये rather मीटिंग जो थी वो सुबह की प्लान थी. Some sort of miscommunication happened. I was not aware कि मुझे सुबह में आना है. मैं ये इस टाइम स्लॉट को प्रिपेयर करके बैठा हुआ था. So apologies from my side. Okay, so we are, shall we proceed, sir? Okay, so first of all, we are so sorry for those who were present at in the evening. We weren't able to conduct the webinar. There was some kind of miscommunication. So all those things happens and we faced it. We will try to improve it for it next time. And first of all, this is the Fatma from Engineers Talk. And if you don't know about Engineers Talk is an organization that aims to bridge the gap between student life and professional life. So we aim to conduct the webinars on the things that are not actually taught in a school. We think should know by a person who is entering into the corporate world. All our youth should know those type of things. So this is the first session of Bootcamp on Emerging Technologies in collaboration with AI, Explain Your Sciences. In this webinar, we are going to focus on emerging sciences and emerging technologies, all about specifically focusing on 5G, that how 5G enables us the spontaneous connectivity to billions and billions of people. And internet, this is 5G is basically the internet generation, and fifth generation, our next generation, upcoming generation. So how 5G is much more than just the next generation is our today's webinar topic. And today's our speaker is Wasik Nadeem Khan, sir, who is currently employed as 5G control plane architect, software architect, and 5G R&D engineer at Nokia. He have completed his BS in computer software engineering from NUS and completed MS from NUS. In 2019, he received his MBA degree from the University of Warwick. So without wasting time, let's move forward today's webinar, in which we are going to learn all about 5G, what's 5G, how far it is, what is the difference between 5G and how 5G is more than just the next generation. So without wasting time, sir, thank you so much for being here, for taking out your precious time. We are so thankful for that you were taking it out among your time and just to explain and aware our youth and arrange this bootcamp. So first of all, we are so much thankful to you. Sir, are you here? Sorry, can you hear me now? Yeah. Yeah. I think your microphone was off. Yes, first of all, it was muted. Thank you so much. And now I would like you to proceed. So over to you. Thank you very much for the introduction. I'm humbled to be part of your forum, and absolutely, I'm more than excited to take you through the slide set. So it's really exciting times for us, and let's have a look what we have here. So my topic basically is, we talk about 5G as the next thing coming after 4G, LTE, and it's not just another G. So it's much more, and I would like to take you through this journey that at least I'm on, and I'm very excited to then bring other people into this with me. So let's begin. Very quick disclaimer. So I have taken a lot of content from the internet, put it together. There are some stuff which is from my side as well, but I just wanted to have this here that I want to give credit to the people whose material I have used here, and it's not my own. Wherever that is the case, I've provided references
So you can even go and access that information by yourself at a later stage. So you have gracefully already mentioned the little things that I've been working on through my professional and personal career. I won't spend too much time with this. Let's just say that I've done masters in computer sciences. Basically, my background is software engineering, and I somehow ended up in telecom. That's a long story, maybe for another time. So currently, important part is that I've been 5G, working on the 5G as a software architect, and I've worked on the 3G in R&D for 3G and also on 4G, so as a consultant, and then I got working with Nokia since 2010. So I want to give a couple of hints, firstly, to the people who are here, how to take this forward, because this is going to be a very jam-packed session. So what I want you to do is, I want you to focus on the macro aspect. So I will take you through many different types and technologies and what's going on. So don't get too involved in every little aspect. Try to keep your mind, sit back and relax, and just try to look at the overall macro aspect of what's going on. And of course, we can always discuss offline or in some sessions more micro elements for each of these topics. Find your area of interest. So from all those macro aspects, find what's interesting for you, what you are already good at, what you are looking at in your field or your future field. So you probably know yourself what is your interest in this story. And once you find that, then try to see and engage. So this for me is very critical. Try to find the right people who you can get in touch with and try to find more on that. So we can always have dedicated workshops on any of those micro topics when the time comes. So with that out of the way, let's first create some kind of a baseline. What are we talking about? So why is 5G such a big deal? So from an economical perspective, 5G has big numbers next to it, which was not present in the previous generation of these telecom technologies. So $12.3 trillion is a big amount targeted in about, let's say, 15 years from now, 14 years from now. And that's just the economic output. When we talk about value chain, which is basically contributing to about $3.5 trillion, we talk about the jobs that it's going to create. You can see that in the millions as well. But the most important thing which you want to look at right now is because 5G is an emerging technology. And with emergence, you need R&D. And with R&D, you need to see what kind of budget they've assigned. And this budget is huge. So $200 billion so far has been on average planned here. So this is very interesting. So with that, let's try to see from a regional perspective what's going on. So since I'm based in Europe, so I have a very, let's say, interest in finding out what the 5G ecosystem here is like. So here they have something called as a digital single market. You can go check it out on the internet. It is managed by the European Commission. It has many aspects like cloud and AI and whatnot. But 5G is one of the pillars which they have earmarked. And what that means is that for the future aspirations of Europe, when it comes to digitalization and moving forward, they see 5G as a fundamental factor. And their primary area where they see 5G impact is industrial transformation. So we'll go a little bit into what this really means, but just to give you a perspective that this is where the economy, it's like saying that this is what the wheels of 5G will run on. This is the road on which 5G will run. Then there are naturally the other big powerhouses, the countries that are engaging in 5G in a very, very strong and aggressive way. And Pakistan so far, so I did my MBA research basically also considering Pakistan, and we are basically on the back seat. So we're kind of second mover role we have taken, which means we'll wait and see how this technology evolves, and then we will jump into it. There's a term that is given to 5G, which you guys might not be familiar with. It's called GPT. GPT means general purpose technology. So an example of GPT is electricity. Electricity is a GPT. Why? Because it's a technology that is so general, is so ubiquitous. It is so, we don't even think about it. It's just there all the time. We just use it. So they have people, and I wouldn't go in detail who these people are, but people have designated 5G that it should be a GPT, which means it will be everywhere. It will be like electricity. So all kind of telecoms, all kind of AI systems, mobility, all these things, backend would be somehow run through 5G. So they want to have that. And if you look at this block,
you see pretty much every type of industry is somehow planned to be engaged with 5G. And you can kind of in your head start thinking that, yeah, maybe, okay, I can see some of these already working with 5G, like AR, VR is the new thing. It is very strongly linked with the 5G. We see this IoT kind of applications for the agriculture coming in. So 5G also supports many applications towards that. And it's a good question that, yeah, 4G is already doing it, right? And Sigfox and LoRa and all these are also doing it. So why 5G? Maybe that's another study. But from a general perspective, from the market perspective, 5G is considered to kind of engage with all these industries, which is, again, making it a big player. Another perspective, now this is only looking at the US market. All I want you to focus on here is that this is 2020 and this is the projection of 25. So this is just 5 years. And you look at the graph and it is quite remarkably going upwards. So this is simply market size. And we're just talking commercial retail markets here. We're not talking R&D, investments and all that stuff. We're simply saying the usability of services coming from 5G, how and which industries it's planned to be engaged in. And this is just the US, and we're talking billions. So 22, I would say about is here. So this is almost 2.5 more times just in 5 years. So there's a lot of investment going into 5G. So yeah, let's ask ourselves the question that what is really happening with 5G itself? What is 5G doing that makes it so special that everyone wants to bring it into play? So 5G basically is a triangle of these three things. It's I would call it a tension diagram if you're familiar with the term. Which what it means is that if you sit in the center here, oops, sorry, oops, gone too far ahead. If we sit in the middle here, oh, what's going on? My pen has stopped working. Yeah, if you sit here, basically what it means that if you want to go extreme broadband, and when I say extreme, I'm saying like LTE today, if it gives you, let's say 200 megabits per second, 5G should give you double, triple, 3 times that practically. Theoretically, it's supposed to give you 10 times more, but practically 3 to 4 times. But if you go towards this direction and you say, hey, I want to have extreme mobile broadband because I want to see YouTube in 4K or whatever, you cannot expect these applications to then work. But if you say, I want to have something like self-driving cars, you cannot expect high broadband. Similarly, if you say, I want to have smart cities, then you cannot expect the broadband to be part of those solutions. So these are different use cases which are nicely captured within one technology, which is in this case 5G. And this is their working model. This is the vision they have. This is what they want to attain with 5G. And that's why 5G encompasses everything. So there are things you can't do with Sigfox and LoRa and all the other IoT solutions, which are sitting more like here. You can't do that with them, but with 5G, you can still do that. So you imagine you have one deployment, and with one deployment, you can facilitate all these types of services, which is amazing. And this is what they plan to go for with 5G. I wanted to share with you a little bit of a network perspective, but it's just a very, very high level perspective, just to kind of give you an idea, because many of the terms that will come afterwards will have these terms in it. So it's good to just understand them now. So those who are not familiar with the telecom systems, it's a very simple distinction. You have something called a core. I can't write very well with this mouse, so I'm just going to try my best. Core. So this is the core. This is where and the NGC basically means next generation. It's just a fancy name. So 5GC is another name for it. So this is the core. This is the radio access network. So if you're a user with a phone sitting here, basically you connect to this guy or this guy, and with some fancy other things like carrier aggregation and MIMO and whatnot, you can actually have 2 connections at the same time, but let's not get into that. But this is where the UE, the user, connects to, and the radios, and then this is at the back end where the core basically handles all the communication which is sent from this user and these radio access networks. Sorry, didn't give you the name. RAN stands for radio access network. So everything that comes from these RANs goes back to the core, and the core again goes back to the PSTN or whatever kind of backend, cloud backend or whatever you have deployed. It's traditional network after that.
So all 5G is doing is basically giving new names to existing things, but of course technology is very different. So one thing, as I said, I will not go into too much detail. I think I will take the whole hour if I just talk about each of these services. But what I want to show you is that why is 5G different from a service architecture point of view? So from a software engineering point of view, when we talk about SOAs, for example, so like if you talk about service-oriented architecture, or you say, I have this big 1 million line code application. I cannot write one simple executable for that. That these days makes no sense. So I will just deploy that across multiple services, like you see here. So each of these blocks is one service. And this is, for the first time in 5G, they've actually specified the requirements in this way. So they've considered this very important architectural decision of how they want to implement, deploy, troubleshoot, even have interfaces to the outside. They have done this very nice thing where they said, as an architecture, 5G will be service-oriented, on the core at least. And I will show you in the future, in the next slides, how this is very interesting for the software engineers and the cloud engineers and people who are in that domain, how this is very interesting for them, because it certainly changes the whole architecture of how such elements, network elements from a telecom point of view are now undertaken. So for this slide, just take with you, this is the 5GC. This is the user plane traffic part. And you see that they're nicely encapsulated in their own services with well-defined interfaces, which are either JSON-based or could be Rust interfaces, HTTP-based, you name it. It's, doesn't really matter that part. The part that matters is that they have done this well-defined interface definitions. And this is something very good. So this, I'll show you later on how this really helps make 5G more interesting than the previous technologies. This is one example now from a protocol stack. So you guys have probably read the OSI protocol layers and things like that. So you have the basic layers, the PHY, and then you go up the protocol stack and you go up and up. So it's a very similar protocol model also on the RAN side. So personally, for myself, I basically have worked in these protocols, so the RLC MAC layers in the 3G, 4G area, and in the 5G area, I'm basically working with the RRC protocol. So basically, we kind of implement these protocols and make these interfaces between them. So what's interesting here? Why am I sharing this picture with you? The reason is that you see these little splits here, split 7, split 8, split 2. What they've done is that they have made this architecture flexible. So previously, this flexibility was not there. This is the 4G part. The previous flexibility was rather bound. So you had very something called baseband unit. So you had some protocols that are sitting together, very efficient. As you all know, monoliths are much more efficient from performance than microservices, for example, or any kind of deployment architecture. So here, a monolith being very efficient, it's very nicely stacked, and the performance is good, and the complexity is low. So that is all good. But if you start talking about multiple types of deployments, and this is what we will get more into in the next slides, you cannot have such a fixed mapping. You need some kind of breakup of the interfaces across the different areas. So here you see we have the split 7 where the PHY is broken into 2 pieces. So this is, sorry. You see the PHY here is mentioned 2 times, but here you see the PHY is only mentioned once. Here the PHY is again mentioned only once. What's going on? So what they're doing is they're making the architecture flexible. They're giving you these options. Oh, you can deploy it like this, or you can deploy like this, or you can deploy like this. It's really up to you. Go ahead and figure it out. And you see this term here, telco cloud. This is what they want to do on the back end. So you see the term CU, this is called central unit, and you have the term DU, which is called, it's called deployment units, usually is the term we use. But this is basically something that can be deployed on the radio side, on the cell side, very close to it, and this is something that sits usually at the back end. So the important picture from here is the interfaces are nicely separated, just like we saw before.
We see these nice little interfaces. We see the nice little services. They've done something similar now on the radio access. And actually, this is an extremely complex thing to achieve, even though architecturally is a very good direction to go into. So again, fundamentals of 5G, or actually telecom in general, but I wanted to give you these terms again. So we have types of cells. I keep doing this, sorry about that. We have these types of cells. So you have cells which are with a range which is really, really low. You know, very, very concentrated to a certain small little area. You can see the number of users is very limited, you know, like maybe a building, an apartment or something like that. But then it starts to scale up. It goes from pico to micro to macro, and you can see in the picture that it starts to get bigger and bigger. So you would imagine that a 5G cell that is deployed, let's say in a macro capacity, might be similar to a 5G cell deployed in a pico capacity. But naturally, that's not the case. And that's where my previous picture comes into play, because how do you deploy, or what options you have to deploy these 5G networks depending on the type of coverage that you're interested in. And if you remember that triangle that I showed before, so if you have a smart city, you're probably concentrating maybe here, maybe in the urban space, but definitely not on a macro level. So macro cell is a huge space, and you need, yeah, I mean, the smartness has to be quite expanded. But for a small thing, this is like New York, Manhattan, one of the areas which are planned for a smart city. The city I'm in Germany is also planned for smart cities. So it's a small city, relatively small, and that's why it's easy to achieve such a goal. And so the kind of 5G that will be deployed there might be different from the type of 5G deployed, let's say, on a micro cell. So that's what I wanted to share with you. And, you know, when we talk about small cell and then the big cell and femtocells and picocells, please keep that in mind, that basically what it changes is the type of deployment we have of the radios. So you see, previously we had this macro base station, these big towers, the Kumbas that you see on top of buildings and things like that. You see that they're actually becoming smaller and smaller and smaller and smaller. And the reason why they're becoming smaller and smaller is because if what 5G is allowing is that you have basically in LTE, you have a fixed range or fixed band. You have a band that can go up to, so it's basically called centimeter wave. So decimeter wave is like, you know, like 1800 megahertz or 1900 megahertz. So GSM usually, you know, if you look up your telecom provider, you will see it'll have like 1800 megahertz or 1900 megahertz or 2.4 gigahertz, 2.7 gigahertz also, 3.5 gigahertz are also present in the market. But normally it doesn't go to 6 gigahertz, for example, and definitely not 28 gigahertz or 38 gigahertz. And 7085, okay, we haven't even achieved that. So at least what I know is there is good deployment models already for the 38 gigahertz. And what that means is that you have a much bigger bandwidth that you can send the signal on. So you see this is increasing. You had a bandwidth maximum of 2 gigahertz, but now it's gone up to 4 gigahertz. But here, with the 2.7 gigahertz, you usually have like, you know, 20 megahertz, 40 megahertz with some aggregation, carrier aggregation. So LT doesn't give you a lot of possibility. It can have a maximum of 100 megahertz. So compare 100 megahertz data throughput compared to a 2 gigahertz. That is just phenomenal. That really boosts it. But the problem is to get this kind of deployment, you have to make your cells really small. So if I go back, we're talking here. We're really at this level. So we are not supporting like thousands of users now. We're supporting like maybe hundreds, maybe tens. So the radio is smaller, the coverage is smaller, the users are smaller, but you get extreme data rates. And now you can start thinking, okay, if I'm getting extreme data rates, then maybe now I can watch YouTube on my phone at 4K, or I can do AI. You can do virtual reality on your headsets or whatever at, you know, which requires gigabits of throughputs. You can now manage that on a basic telecom connection that you have on your mobile phone. So that's where it's going from a EMBB perspective, which is basically enhanced mobile broadband. And that millimeter wave basically is this stuff here, which you see. So ultra wideband, ultra wide throughput.
but smaller cells, something like that. So you'll see lots of small little things running around. So in summary, for this part so far, 5G, basically, we haven't talked latency, but this is very fundamental. It should be, so imagine you are watching, you're doing one of those Google headset thingy. You need very, very low latency. You cannot have latency more than, I think if it was 6 or 7 or 10 milliseconds, because you kind of get a headache. It really needs to be really, really low. Maybe it was 16 milliseconds, I don't remember. But it cannot be like we have today in LTE. It's quite high. And you cannot have a good experience with the virtual reality if you have that high latency. So you need really low latency. Also driving cars. Imagine with a driving car running at 120 kilometers per hour, 1 millisecond is a huge deal, So you really need low latency. I showed you the density, so the number of cells which will increase, but because with the number of cells that increase, you can actually reduce the overall power of the transmission. This is, let's say, a bit more, and it goes into another study, but just trust me on this. So the efficiency in your signaling improves as the density goes up. Throughput I already mentioned. So in the previous example, I was showing you how you can now get, with the bigger bandwidths, you can get more throughput. Bigger bands allows you more bandwidth, which allows you more throughput. Spectrum efficiency we haven't really seen, but basically, okay, there are some technologies. That is not my area, this antenna techniques, but definitely this is something I know from the R&D side, that they have indeed achieved such kind of spectral efficiency with respect to the transmission of the different bands under 5G as compared to LTE, because 5G actually has an overlay over LTE. So 5G can have the same frequencies that LTE has today. So it can also do a 2.7 gigahertz. That's not really a problem. Traffic capacity, it's expected to be much more, basically small cells like we mentioned before, and okay, energy consumption. And this is where the cloud comes in. We don't have to have systems running all the time. We can actually switch off things which are only used then in high traffic models or high traffic profile models. Okay, we will now switch to another aspect. So I'm going to go a little bit now over a little bit of, let's say, a bit more detail, but just to reiterate the same things we already talked about. This is nothing new. Don't get too alarmed by the picture itself. We talked about the core. In this case, this is data throughput. So we're basically talking about the packet core. The packet core usually is more to deal with the data that is happening. So the GTP tunnels, for example. The important thing here is that you have something on the radio side that had a certain type of traffic profile, and that was determined, or rather fixed. You couldn't have a lot of flexibility on the LTE side. So the 20 megahertz was rather static. Definitely you could have more frequencies, like it says 700 to 3.8 gigahertz, but the bandwidth was usually 420 megahertz. And then you just had this carrier aggregation and this kind of stuff to improve your spectral, to improve your bandwidth towards the users. 2 antenna usually was the common solution. And here you can see that, okay, there's a certain amount of throughput you're expecting, so 2.45 gigabits per second. However, now what's happened is that because of these requirements on the radio side, I just shared with you how the throughput is going to go up and up and up and up. This number here of the radio heads will go much bigger. So this is going to go with the small cell deployments and the MIMO, massive MIMO and millimeter wave. You can imagine that the data throughput will be huge, like I showed you before. So you see, already we have this problem that even though we like this guy here to watch really nice YouTube, but how do we make the network provide that speed or that throughput to all the users in that cell and other users across the cell? You see, the radio head usually is distributed, but the BBU or the pool is usually not distributed. So this one is more static. It's like your back office. So it sits there with many resources on the table, and it has lots of these connections, CPRI connections they're called, or eCPRI, depending on what variant is being used. Not important. Just imagine that there's some kind of fiber optic
solution or something that connects to these. But if you have many of these, thousands of these, then for sure the data throughput here would be huge compared to here, where the data throughput is much less. So we do have a lot of problems here. And for that, this is why I was sharing with you before that they have planned this kind of flexible model of deployment. So you can think about how you're going to deploy. So like not everything will have massive MIMO next to it. Like macro cells I showed you before will not have massive MIMO and millimeter wave. That's just not a model designed for a macro cell. It will be 700 megahertz cell, 20 megahertz, maybe the bandwidth, and they'll be happy because they want to provide to a big village a lot of coverage, but over long distances. Makes no sense to do that kind of deployment where you need, like I said, the New York, Manhattan kind of case, very dense population, but in a small area and all wanting very high throughput, completely different model, right? So you have now the flexibility of doing like this Lego build and block way. So you can connect and see, what is my requirement for this deployment? What do I need to have closer to the radio? What do I need to have closer to the backend? And there are trade-offs, of course. You can see them here. So depending on what, which option you take, you take option 1 or option 2 or 3 or 4. Doesn't matter which option you take. The important thing is you have some trade-offs next to it, and you look at your deployment, like those cells we just looked at, and you say, which one works for me? So I will take that model and I will deploy that kind of a network. So you see, it becomes much more flexible compared to what we had before, where the flexibility was lacking. This is a similar picture of the same. Yeah, please. Vasik, sorry to interrupt you. No there is a question I would like to ask. I'm not basically well versed in telecommunications, so I've never heard of it. So this is my first time, just generally taking it all. So what I have a question before starting my main question is that what's LTE here? What's LTE? You were using it again and again. I don't got it. Oh, I'm sorry about that. So I should have maybe mentioned that. LTE is your 4G. So, today in Pakistan, I think every network offers 4G services, right? They say 4G ki saath speed bahut achhi milti hai, and I don't know, whatever. Ishtihar jo bhi aate hain uske. So 4G is LTE. Are you familiar with LTE or 4G or current technology जो अभी आजकल deploy हुई है? Yeah. Definitely. Okay. कि हमारा जो internet है वो generally 4G पे है. 4G पे है, exactly. So अब आप 4G को, ये 4G के let's say back end पे जो चीजें चल रही हैं. So this is, whenever I say LTE, LTE basically is 4G. So LTE is long-term evolution. So it stands for LTE, stands for long-term evolution. और ये एक ही चीज है. LTE is 4G, 4G is LTE. So LTE is just a technical name for 4G. So we are talking about how 4G doesn't enable us to give the flexible architecture. We don't get much options. So what 5G is basically going to do, what I understand from your presentation, is that we are going to plant many cells across the area, if that's right. Yes, basically, you have now this option. Let me just go quickly back here. You have now this option to say, okay, मेरे use case क्या है? So what am I after? मैंने करना क्या है? और आपने जो करना है ना, उस लिहाज से आप अपने ये जो प्रोटोकॉल है आपकी, जो आपने ये जो बनाया आपने, ये आप उस लिहाज से डिप्लॉय कर सकते हैं. और उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है, उससे आपके पास ऑप्शंस ज़्यादा आ गई हैं. सो अब आप देखोगे कि अच्छा, मैंने जिस तरह बात हो रही थी कि मैंने इस यूजर्स को या इन यूजर्स को, मैंने जिस तरह बात हुई कि अगर हमने किसी गांव में कवरेज देनी है और वो गांव लेट्स सपोज काफ़ी बड़े एरिया के ऊपर है, तो वहाँ पे हम ये वाला मॉडल जो है ना, ये हमारे लिए बेहतर है. नंबर 4, क्योंकि उसमें जो ये बैक एंड है उसके ऊपर प्रोसेसिंग बहुत कम है, ये बहुत चीप होगा. ठीक है ना, इसमें आपके सिर्फ रेडियो लगा हुआ है, आपकी फिजिकल लेयर की एक छोटी सी इम्प्लीमेंटेशन है, and that's it. It's a very cheap solution. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस सॉल्यूशन के अंदर आपका जो मेन काम हो रहा है फिर वो अब इस तरफ हो रहा है, which means कि ये एक
मतलब यहाँ पे आपकी ट्रैफिक प्रोफाइल बहुत बड़ी हो सकती है। यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि ये मॉडल जो है नंबर 4, ये मॉडल नंबर 1 से बिल्कुल डिफरेंट है, बिकॉज जो आपकी प्रोसेसिंग है वो एक डिफरेंट जगह पे हो रही है। अब ये 1 के अंदर ये 4 प्रोटोकॉल है जो आपके रेडियो हेड पे हैं, और रेडियो हेड ये है, ये जो खंबा लगा हुआ है। सो अब आप सोचें कि आपका ये रेडियो हेड जो है बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, ठीक है, इट्स गॉट 4 थिंग्स टू डू। और अगर वो जितना ज़्यादा काम करेगा ना, उतनी उसको पावर चाहिए, उतना ही उसको डब्बा बड़ा चाहिए, उतनी ही उसको प्रोसेसिंग ज़्यादा चाहिए, वगैरह वगैरह। सो आपका यूनिट बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, ये वाला। और जो आपका बैक एंड है वो खाली बैठा हुआ है, उसके पास एक इम्प्लीमेंटेशन है, वो फटाफट करेगा और ख़त्म हो जाएगा। तो ये होता है फारिग बैठा रहे, इसके पास हो ही ना कुछ करने को। सो ये डिपेंड करता है आपकी डिप्लॉयमेंट कैसी सेट हो रही है, और कुछ जगहों पे इसकी ज़रूरत भी होगी। अब फॉर एग्जांपल अगर हम एआई की बात करते हैं, या हम किसी ऐसी चीज़ की बात करते हैं जहाँ पे हमें इस जगह पे वाकई बहुत ज़्यादा कंप्यूट पावर चाहिए, हमारी रिक्वायरमेंट है, और हम कहते हैं यार बैकएंड तक अगर हम जाएंगे ना तो हमारी लेटेंसी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, ट्रांसमिशन है। और ये ट्रांसमिशन जो है ये कुड बी अप टू सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स, हु नोज, डिपेंड्स करता है कितनी दूर की डिप्लॉयमेंट है। लेकिन डेफिनेटली अगर आप यहाँ पे सारा काम कर लेते हैं, तो जो आपका यूज़र है जो ये फ़ोन में बैठा हुआ है, इसको बहुत अच्छी सर्विस मिलेगी, लेकिन ये यूनिट बहुत महंगा हो जाएगा। समझ रहे हैं ना थोड़ा सा इसके अंदर तो ये हमें ये फ्लेक्सिबिलिटी हमारे है। पास ऑप्शन फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा आ गई कि डिपेंड करता है, अगर हम यूनिट महंगे रख सकते हैं, मतलब अगर कोई हमें काम जल्दी करना है तो हम वो उसका फर्स्ट वाले मॉडल पे जाएंगे। फिर अगर हमें कोई काम ऐसा करना है जिसमें हमें डिले हो सकता है, डिले होगा तो इतना मसला नहीं होगा, लेकिन इनएक्सपेंसिव होगा तो हमें, हमारे लिए एक्सपेंसिव ज्यादा हमें क्या कहते हैं, नुकसान देगा, हार्म होगा, तो फिर हम फोर्ड हमारे लोग मॉडल यूज करेंगे। मॉडल 4 यूज कर सकते हैं, ओके। बिल्कुल बिल्कुल। सो ये फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास आ गई है। अब इसमें डेफिनेटली प्रॉब्लम ये है कि आपका ये इंटरफेस तो एक ही है, ये जो लगी हुई है लाइन खिंची हुई है ये एक ही है, लेकिन जो आपका ये जो डाटा ऊपर लिखा हुआ है ना, अब आप अगर अगर आप प्रोटोकॉल स्टैक्स, मैंने मेरे पास तस्वीर नहीं है इसकी, लेकिन अमूमन प्रोटोकॉल स्टैक कैसे होता है, ये एक तस्वीर होती है, ये आपके लेट्स से फिजिकल लेयर है, इसको मैं 1 कह देता हूँ, ठीक है। फिजिकल लेयर के बाद जब हम अगली लेयर पे जाते हैं, सो अगर हम यहाँ से फाइ से हम मैक पे जाएं, तो मैक में क्या होगा कि मैक का अपना एक हेडर होगा, ठीक है, और मैक के हेडर के बाद मैक का डाटा होगा, सॉरी एंड तक जाएगा, मैक का डाटा होगा, ओके। अब सपोज ये हो गया, अच्छा जी, उसके बाद हम कहते हैं कि जी अब आरएलसी भी आ गया, ओके जी, अब आरएलसी का भी एक हेडर होगा, और आरएलसी का हेडर थोड़ा बड़ा होता है, वो भी आ गया। अब आप सोचें कि अगर आप ये कर रहे थे यूज, तो आप खाली ये ट्रांसमिट कर रहे होंगे नीचे वाला, ठीक, तो आपका डाटा कम होगा, क्योंकि आपने खाली ये लेयर सेंड की है और इसकी इनकोडिंग की है। अगर आप ये भेज रहे हैं, तो आप ये सारा डाटा भेज रहे हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, विच मीन्स कि यहाँ पे ज्यादा ट्रैफिक होगी, क्योंकि पैकेट का साइज बड़ा है। तो जब पैकेट का साइज बड़ा होता है और इसकी एक फिक्स कैपेसिटी होती है, अब उस फिक्स कैपेसिटी, लेट्स से उसकी कैपेसिटी जो है वो एक्स है, अगर उसकी कैपेसिटी एक्स है और उस एक्स कैपेसिटी के अंदर वो दोनों केसेस में, यहाँ भी उसकी कैपेसिटी एक्स है, सॉरी, यहाँ भी उसकी कैपेसिटी एक्स है, यहाँ भी उसकी कैपेसिटी एक्स है, लेकिन यहाँ पे डाटा उसके पास जो है वो लेट्स से 10 है, और यहाँ उसके पास जो डाटा है वो 2 है, तो नेचुरली ये वाला जो है, यहाँ पे ज्यादा आप ये यूनिट्स डिप्लॉय कर सकते हैं, बिकॉज कैपेसिटी आपको अलाउ कर रही है। उसके मुकाबले में यहाँ पे क्योंकि डाटा आपका जो है वो 2 x 5 हो गया है लेयर्स की वजह से, अब आपके यहाँ पे यूनिट कम लगेंगे, मतलब आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि आपकी कैपेसिटी थ्रूपुट जो आपकी प्रोफाइलिंग होती है, जो आप देखते हैं कि जी मेरे पास इस वक्त मैं कितना इसके ऊपर थ्रूपुट जनरेट कर सकता हूँ, ये मैंने पिछली स्लाइड पे दिखाया, यहाँ पे उसने कहा 2.45 गीगाबिट्स पर सेकंड, ये उसकी एक कैपेसिटी है, इससे ऊपर वो नहीं जा सकता, है ही नहीं उसके पास ऑप्शन। सो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो चीज़ है ये कितना डाटा भेज रही है। तो अगर हम यहाँ पे सारा प्रोटोकॉल इंप्लीमेंट कर देते हैं, एक तो एक्सपेंसिव हो जाएगा, और आप सोचें कि रेडियो हेड जो है ना वो बहुत से लगे होते हैं, तो वो सारे यूनिट्स पे जब लगेगा तो वो दिस इज एन एक्सपेंसिव सोल्यूशन, बट आपको एडवांटेज ये है कि यू कैन डू मेनी थिंग्स देयर, सो इट्स गुड। लेकिन यहाँ पे जो डाटा ट्रांसफर होगा वो डाटा रेट वही रहेगा, लेकिन आपकी जो 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 कंटेंट ऑफ डाटा है वो बढ़ जाएगा, तो उसकी वजह से जो ओवरऑल यूजर्स होंगे वो आपके कम हैंडल हो रहे होंगे, बिकॉज वो इतना यूजर्स को हैंडल ही नहीं कर पाएगा इसकी रिस्ट्रिक्शन की वजह से।
तो ये मतलब ये चीज़ें अगर इसमें बाद में हम जाना चाहें तो हम इसकी और डिटेल में जा सकते हैं कि ये कैसे, ये इसकी जो डिप्लॉयमेंट्स हैं ये कैसे, which deployment applies to what type of to use case. लेकिन अभी जो समझने की चीज़ है वो यही है कि जिस तरह मैंने वो कोर का दिखाया कि उन्होंने एक बड़ा अच्छा सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर बना के कहा कि जी आप इसको अलग-अलग डिप्लॉय कर सकते हैं, और वो अगली स्लाइड्स में मैं दिखाऊंगा कि उसका फ़ायदा क्या होता है। उसी तरह यहाँ पे भी उन्होंने डिवाइड किया, बेसिकली वो एक ही आर्किटेक्चर मॉडल पे दोनों को चलाना चाह रहे हैं, क्लाउड साइड को भी और रेडियो साइड को भी। तो इसको मैं हम लोग इसको रेडियो कहते हैं, ये वाला पार्ट जहाँ तक ये ख़त्म हो रहा है, और उसके बाद जो है ये पीछे वाला पार्ट इसको हम कोर कहते हैं। कोर है, ये कोर जो है ना, ये इसकी एग्जांपल ज़्यादा है मेरे पास, क्योंकि कोर आजकल ऑलरेडी क्लाउडिफाई भी हो रहा है और वर्चुअलाइज भी हो रहा है, तो वो आगे एग्जांपल्स में आएगा। रेडियो साइड बहुत ट्रिकी है फॉर मेनी रीजंस, उस पर अगर टाइम हो तो फिर हम डेफिनेटली उसमें भी जाएंगे, क्योंकि मैं आजकल मेरा जो एक्चुअल काम है वो इसी साइड पे है, इसकी कोड शोड लिखना और इसकी डिज़ाइनिंग करना और आर्किटेक्चर बनाना, और इट इज़ वेरी ट्रिकी कि आप लो लेटेंसी भी रखें, आपने परफॉर्मेंस अच्छी देनी है, और आपका थ्रूपुट भी चेंज नहीं हो सकता, और डिप्लॉयमेंट बहुत फ्लेक्सिबल है, और उसके बाद आप कहें कि जी मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए और मुझे क्लाउड पर भी चाहिए, वो फिर बड़ा जो ये परफॉर्मेंस का जो रियल टाइम का मसला है ना और नॉन रियल टाइम का, ये फिर इशू बन जाता है। बट या वी कैन कम बैक टू दिस अगर इस पे okay इंटरेस्ट हुआ हमारा। that So now I'll put this there. Now I'm getting it all, so now I would like you to proceed from here. Continue. Sure. Amazing. Okay, so good place for us to have that discussion, because अब हम थोड़ा सा टॉपिक चेंज करने लगे हैं। सो नाउ सॉफ्टवेयर और क्लाउड के लोग ज़्यादा जाग सकते हैं वापस, क्योंकि अब हम टेलीकॉम पे कम रहेंगे, अब हम थोड़ा सा नई जगह पे जा रहे हैं। अभी नई जगह जो है वो ये है कि अभी हमने ये 5G कोर की बात की थी, वो जो बैक एंड मैंने आपको बताया था, सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर दिखा रहे थे ये, और रैन, इसकी अब ये एवोल्यूशन की बात शुरू हो गई है। जो पिछला हमने सारी तस्वीरें देखी हैं, हम उसकी अब डिटेल में जा रहे हैं कि वो हो क्या रहा है वहाँ पे, क्यों ये स्प्लिट्स इस तरह से हुए, जिस तरह से भी हम डिस्कस कर रहे थे कि वो अब फ्लेक्सिबल हो गया है डिप्लॉयमेंट उसकी। और उसका चक्कर सारा ये है कि दे वांट टू अटेन और प्रमोट समथिंग कॉल्ड नेटिव क्लाउड। ये एग्जैक्टली वही डेफिनेशन है जो कि आप आजकल आईटी डोमेन में, जिसके ऊपर हम मतलब मौज कर रहे हैं, AWS की यशी, अजूरे की यशी जो मिली हुई है कि हम कोई भी कंटेनर उठाते हैं, वो लैम्बडा उठाते हैं और उसके ऊपर कुछ डिप्लॉय करते हैं और उसको रन करके हम फारिग हो जाते हैं, दैट्स इट। सो वी पे एज वी यूज, और वो रिसोर्सेज जो हैं वो हमारे उस वक्त काम आती है, और स्केल करना है हम स्केल कर लेते हैं, स्केल इन स्केल आउट, फैन इन फैन आउट कर लेते हैं एज आवर रिक्वायरमेंट अलाउज अस। सो 5G जो है उसकी जो स्टैंडर्डाइजेशन बॉडी है जिसका नाम 3GPP है, इसका मैंने लिंक यहाँ दे दिया। इन लोगों ने बेसिकली स्पेसिफिकेशन में कहा है कि जी वी वांट टू बी नेटिव क्लाउड। दिस इज अ वेरी बिग थिंग फॉर देम टू से, बिकॉज अभी तक टेलीकॉम में कभी भी नेटिव क्लाउड का वर्ड नहीं यूज हुआ था, लेट अलोन के करेंगे कैसे वो एक अलग बात है, बट एटलीस्ट रिक्वायरमेंट्स। तो नॉर्मली जो हमारी डिप्लॉयमेंट होती है ना वो क्लासिकल होती है। क्लासिकल वो है जो मैंने आपको भी पीछे दिखाई, एक खंबा लगा हुआ है, खंबे के ऊपर एक सर्टन प्रोटोकॉल्स की इम्प्लीमेंटेशन है, वो पीछे एक बोर्ड के पास जा रही है, बैकएंड में जा रही है, वो बैकएंड जो इसको हमने बेसबैंड यूनिट कहा था, BBU कहा था, उसमें एक सर्टन प्रोटोकॉल्स की इम्प्लीमेंटेशन फिक्स्ड हुई हुई है। वो बोर्ड है, उसको हम अमूमन रैक में जाता है, कोई रैक मेरे पास तस्वीर नहीं है वरना मैं आपको दिखाता, वो रैक होता है, उसके अंदर स्लॉट्स होते हैं, वो स्लॉट्स में आपके कार्ड्स डल जाते हैं, वो कार्ड बेसिकली आपका ये होता है, BBU होता है। तो आप कहते हैं जी मेरे जो है ना जी यूज़र, वही बात, अगर हम न्यूयॉर्क या मैनहट्टन या टोक्यो या इस तरह के बड़े सिटीज़ की बात करें तो ये ह्यूज नंबर ऑफ रैक्स लगे होते हैं, उसमें ये सारे बोर्ड ठुसे होते हैं, और अगर रात को न्यूयॉर्क किसी वजह से सो गया है सारा का सारा और कोई भी यूज़ नहीं कर रहा, वो चलते रहेंगे सारे रैक, वो आप ऑफ नहीं कर सकते। सो दे आर ऑलवेज देयर, ऑलवेज एक्टिव, ऑलवेज ईटिंग एनर्जी, बट दैट इज योर टिपिकल क्लासिकल सोल्यूशन। जो टिपिकल एक होता है कि आपने जैसे घर के अंदर आपने कंप्यूटर ऑन करके छोड़ दिया क्योंकि जी मेरे वो डाउनलोड लगा हुआ है इस वक्त। पुराने ज़माने में हम लोग नैपस्टर यूज़ करते थे, तो नैपस्टर की वजह से 24 घंटे कंप्यूटर चल रहा होता था। तो बस अब ये ऐसा ही है, अब वो नैपस्टर बेशक डाउनलोड करके फारिग हो गया, लेकिन आपका कंप्यूटर चल रहा है, वो बिजली खा रहा है वो, सो ठीक है। लेकिन अगर आप इंटेलिजेंस की तरफ जाएं तो आप कहें अच्छा जी वर्चुअल सोल्यूशन भी हो सकता है, तो मैं ये हाइपरवाइजर डिप्लॉय करूँ, उसके ऊपर मैं अपनी वर्चुअल मशीन चलाऊँ, और VMware की या किसी चीज़ की, और वर्चुअल बॉक्स की फॉर एग्जांपल, कोई भी, और आप उसको बेसिकली वर्चुअल यूनिट्स को आप चलाएं और आपका जो मेन यूनिट है वो खुद कुछ ना कर रहा हो, जो आपका
होस्ट ओएस जिसको कहते हैं, होस्ट जो है आपका। सो दिस इज ऑल्सो अ कॉन्सेप्ट वर्चुअल का, कि अब नेटवर्क्स जो है वो वर्चुअल भी डिप्लॉय हो सके, एंड मोस्ट लेट्स से लेटेस्ट या मोस्ट इंटरेस्टिंग इज कि वो प्योर क्लाउड डिप्लॉयमेंट हो। एंड क्लाउड आई रियली मीन आईटी क्लाउड्स लाइक AWS एंड Azure, तो हम आगे भी देखेंगे। सो दिस इज लेट्स से अब हम एक नए चैप्टर में जा रहे हैं इस प्रेजेंटेशन की। सो लेट्स सी इसको हम कैसे हैंडल करते हैं। सो एक तो मैं आपकी एक फोकस इस तरफ ले जाना चाहूँगा कि अब ये कुछ नई बातें आने वाली हैं, और दूसरी जो मैंने चीज़ आपसे मेंशन करनी है वो एक अलायंस है, उसका नाम ORAN है। इसको पहले ये कहते थे टिप कहते थे, इफ आई नॉट रॉन्ग, टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रा प्रोजेक्ट। ये फेसबुक मार्क जुकरबर्ग ने 5 साल पहले या 4 साल पहले किसी एक मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में ना ये अनाउंस किया था। उसका मकसद ये था कि आप बेसिकली व्हाट ही वांट्स टू से इज कि जो आपका इस वक्त आईटी का सोल्यूशन क्लाउड पे चल रहा है ना, उसी तरह टेलीकॉम का सोल्यूशन होना चाहिए रेडीमेड जो क्लाउड पे चले। सो बेसिकली आप मिक्स एंड मैच करते फिरें, आप नोकिया से खंबा ले लें, एक उसका रेडियो यूनिट ले लें, आप एरिक्सन से उसका कुछ यूनिट उठा लें, आप हवावे से किसी उसका यूनिट उठा लें, और आप सारे ऊपर नीचे लगा के किसी क्लाउड के इंफ्रास्ट्रक्चर पे चला लें। सो ओपन रैन का ही कॉन्सेप्ट था, और इसमें ओपन रैन की जो अलायंस है दे आर क्वाइट एम्बिशियस, और ये एक तरह से थोड़ा सा पैरेलल चल रहे हैं 3GPP के। सो अब हमारे पास दो पार्टी के अंदर, so 5G is not just an interest of 3GPP specifying requirements for the radio and cloud and radio and core. अब ORAN भी आ गया है, और ORAN जो है वो बेसिकली रिक्वायरमेंट्स नहीं डिफाइन कर रहा 3GPP की तरह, लेकिन वो कह रहा है इसको हम डिप्लॉय कैसे कर सकते हैं। सो उसका ज्यादा इंटरेस्ट डिप्लॉयमेंट की तरफ है, और मैनेजमेंट की तरफ है, और ऑर्केस्ट्रेशन की तरफ है। तो वो अभी हम लेट्स हैव अ लुक कि ये कहानी क्या है। सो पहले तो थोड़ा सा जरा बैकग्राउंड, आई एज्यूम कि आप लोगों को आइडिया होगा, बट स्टिल आई थॉट के देयर इज नो हार्म कि एक तस्वीर रख दी जाए इसके ऊपर कि व्हाट इज वर्चुअलाइजेशन एंड व्हाट इज क्लाउड, बट नॉट फ्रॉम definition of a typical definition, but rather application perspective से, कि बेसिकली आपका जो नेटवर्क फंक्शंस हैं, इनको हम NFs कहते हैं, NF1 NF2, ये नेटवर्क फंक्शंस हैं। नेटवर्क फंक्शंस आपकी इस वक्त वो एप्लीकेशन है जो कि लेट्स से टुडे आपके किसी टेलीनॉर के कोर के अंदर, जो कि नोकिया ने दिया है, जिसके किसने भी नोकिया पता नहीं किसने दिया हुआ है उनको, जो भी कोर जिसका भी प्रोवाइडर वेंडर है, उसने उनको वो फंक्शन दिया हुआ है। अब वो क्या होता है कि वो कोर जब देते हैं ना, तो वो लेट्स अज्यूम कि वो पूरा उसका सर्वर भी दे रहे हैं, उसकी सारी हार्डवेयर भी दे रहे हैं, उसके कार्ड सब कुछ उसको दे रहे हैं। सो टेलीनॉर जो है वो उनको कहता है कि यार ठीक है, तुम मुझे सारा कुछ दो के लगा दो, और लगा के रैन से कनेक्ट कर सब कुछ करके दे दो, मैं उसको ऑन करूंगा और चलाऊंगा, दैट्स इट। उसके मुकाबले में नेचुरली दिस इज अ लिटिल बिट डिफरेंट, बिकॉज इसमें क्या हो रहा है कि वो जो वेंडर है, सॉरी जो ऑपरेटर है, वो वेंडर से कह रहा है कि मुझे एप्लीकेशंस चाहिए। सो एप्लीकेशंस जो हैं दे आर अगेन, वो जो मैंने आपको SOA के डायग्राम में दिखाई थी कि वो जो ब्लू बॉक्सेस हर तरफ कनेक्ट हुए हुए थे, और HTTP और JSON के साथ उनकी कनेक्शंस हुई हुई थी, दैट इज वाई वो स्पेसिफिकेशंस 3GPP ने ऐसे बनाई हैं कि वो एक एप्लीकेशन एज एन NF डिप्लॉय हो सकती है बाय इटसेल्फ। अब अगर आप सोचें कि मैं एक आप में से जो भी क्लाउड डेवलपमेंट करता है और AWS की एप्लीकेशंस बनाई हुई हैं, और वो एप्लीकेशंस आपस में एक दूसरे से बात करती हैं और रेस्टफुल APIs के थ्रू करती है, लेट्स अज्यूम, या JSON के थ्रू करती हैं, व्हाटएवर, इमेजिन द सेम थिंग। सडनली आपका कोर जो है वो एक नेटवर्क फंक्शन के अंदर उसकी एप्लीकेशन चल रही है, वो एप्लीकेशन जो है वो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस जो बाहर फ्री, या ओके नॉट रियली फ्री, बट जो आपको फैसिलिटीज थर्ड पार्टीज प्रोवाइड कर सकती हैं, नाउ यू आर फ्री टू यूज देम एज यू विश। अब आप बाउंड नहीं हो। सो मोंगो डीबी आपने यूज करनी है, गो फॉर इट, राइट, नोबडी इज स्टॉपिंग यू एनीमोर। यू कैन डिप्लॉय एंड यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट एज यू वांट इट। अब क्यूबरनेटिस इस वक्त बहुत हिट हुआ हुआ है, क्यूबरनेटिस को एज ऑर्केस्ट्रेटर फॉर क्लाउड डिप्लॉयमेंट्स इन टेलको, ठीक है। अब मुझे नहीं पता आप लोगों को इसका अंदाजा था या नहीं था, लेकिन कुबरनेटिस इज अ बिग बिग थिंग। और कुबरनेटिस के मुकाबले में अब K3s आ रहा है, उसका नाम ही यही है, K3s, which is the embedded solution provider for Kubernetes. So embedded इसीलिए कर रहे हैं उसको ताकि टेलीकॉम टाइप एप्लीकेशंस उसको यूज कर सके। But the point is कि basically the telecom domain itself is opening up towards open source and towards जो टेक्नोलॉजीज अब काफ़ी एडवांस्ड हो गई हैं ऑन द ट्रेडिशनल IT क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर। सो एकदम से अब आप सोचो कि ये सारा एरिया जो पहले आपको वेंडर प्रोवाइड करता था लाइक नोकिया एंड हू नॉट, ऑल ऑफ अ सडन
it's not required, right? All of a sudden, this is not required. Now what you're asking for is just this one little thing. लेकिन इस चीज़ को याद रखिएगा कि एप्लीकेशन बाय इटसेल्फ सर्वाइव नहीं कर सकती, उसने किसी और एप्लीकेशन से बात करनी है, उसके लिए वेल डिफाइंड इंटरफेसेस होंगे, उस एप्लीकेशन का कोई काम होगा, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, कोई APIs होंगी. सो दैट एप्लीकेशन स्टिल हैज टू बी वेल डिफाइंड, और उसके लिहाज से वो जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो वही हैं जो डे 1 से जो बॉडी 1G 2G 3G 4G 5G डिफाइन कर रही थी, वही अभी भी डिफाइन कर रहा है, विच इज गुड, ताकि इसमें कहीं पे कंफ्यूजन ना आए स्टैंडर्डाइजेशन के दौरान. लेकिन अब डिफरेंस ये आ गया है कि अब वो क्योंकि इंटरफेस स्टैंडर्डाइज हो गया, अब आप बेशक ये एप्लीकेशन किसी एक वेंडर से ले लें, ये किसी और से ले लें, ये किसी और से ले लें, एंड एज लॉन्ग एज दे are fully compliant to the specification, you can have your own deployment. और लोगों ने की भी हैं. There are actually solutions, OpenBTS I think एक का नाम था, 2-3 और भी हैं इसी तरह इंटरनेट पे देखिएगा, जिसमें आप literally you can build your own completely from scratch. You can make your own BTS solution. Literally. So आपको $5,000 के अंदर आपका पूरा deployment unit बन जाएगा आपका, और वो इसी तरह बन कि they have taken open source. और अच्छा कुछ तो ऐसे हैं जो कि क्योंकि अब आपके पास स्पेसिफिकेशंस आ गई हैं ना, अब स्पेसिफिकेशंस को आप पढ़ के खुद से इम्प्लीमेंट कर लें. आप क्यों नोकिया के पास जाते हैं, आप क्यों एरिक्सन के पास जाते हैं, आप खुद से लिख लें अपनी एप्लीकेशन, बिकॉज स्पेसिफाइड है. हाँ, बाकी एप्लीकेशंस आपने जो नहीं लिखनी है, आप बेशक नोकिया से ले लें और एरिक्सन से ले लें, हुआवी से ले लें, जो भी आपके डिफरेंट प्लेयर्स हैं. सो दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, और ये गेम अभी उठ रही है. दिस इज वेरी अर्ली स्टेजेस के अंदर, बिकॉज यू नो टेलीकॉम को इस चीज़ का इतना अच्छा आइडिया नहीं है, बिकॉज ये टेलीकॉम की डोमेन नहीं थी ये सारा कुछ. दिस इज मोर अ डोमेन फॉर द क्लाउड पीपल, जो कि अभी तक क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को संभाल रहे थे. And suddenly telecom has to now work with it, but naturally telecom खुद तो ये काम नहीं करी, basically operator का interest है. telecom ने तो ये application लिखनी है, और उसने किसी cloud वाले को कहना है या किसी operator को कहना है कि जाओ deploy कर लो. But how that is to be deployed is now an operator's concern. So the operator suddenly wants people who are capable of doing this job for them. So ये एक नई किस्म की market है, जहाँ पे जो traditional operator market थी ना, उसके अंदर अब changes आ रही हैं. And I'm not just talking about ये जो platform as a service है, which is definitely something very exciting. Even basic आपकी basic virtualization related जो technologies हैं आपके, क्या कहना चाहिए, I mean Linux, basic Linux की भी understanding होनी चाहिए and things like that. So even lower layers के ऊपर अभी सारा operator has the possibility of deploying their own personal solution. And that's where it gets very interesting. और मेरी अब अगली स्लाइड्स जो हैं सारी वो बेसिकली इसी गेम के ऊपर है. सो ये रेड हैट है, एवरीवन नोस रेड हैट. सो रेड हैट हैज सिमिलर थिंग्स. अब यहाँ पे यू सी हियर, ये सारा जो है दिस इज टेलीकॉम डोमेन. दे आर नॉट राइटिंग दीज एप्लीकेशंस, ये रेड हैट की एप्लीकेशंस नहीं है, ये बाकी किसी टेलीकॉम ऑपरेटर ने लिखी, वेंडर ने लिखी है. सो लाइक नोकिया आज भी लिख रही है, फ्यूचर में भी लिखेगी. दीज आर ऑल दो सर्विसेज जो कि उन्होंने लिखी हैं, और इसको उन्होंने सिंपली कहा है ठीक है ये कहीं से आ रही है, वी डोंट केयर कहाँ से आ रही है, बट ये कहीं से आ रही है. बट देन वी हैव ऑल ऑफ दीज व्हिच वी सपोर्ट. सो रेड हैट कहता है कि मैं आपको सोल्यूशन देता हूँ, आप मुझसे ये सोल्यूशन लें, जहाँ पे मैं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इनके थ्रू प्रोवाइड करूंगा. ये फॉर एग्जांपल MME जो है, ये इसका एक डॉकर इमेज मैं आपको बना दूंगा, कुबरनेटिस उसका कंट्रोल कर लेगा, उसकी ऑर्केस्ट्रेशन ओपन स्टैक से हो जाएगी. ये सारे जो हैं कॉमन फंक्शंस जो है वो इसकी मैनेजमेंट के लिए यूज कर लेंगे, एंड अल्लाह खैर सला. सो सडनली यू हैव completely open source solution other than these network services, of course, and you can go and deploy them and play with it. और क्योंकि क्लाउड सॉल्यूशंस हैं, कल कोई क्रैश होती है, उसका नया सर्वर, उसके नए इंस्टेंस स्टार्ट कर लें, उसका अपना स्केल करना उसको आप स्केल कर लें, नो प्रॉब्लम, राइट. So suddenly you have a lot of flexibility in your house at the operator side. और इसमें vendor इतना नहीं है फिर involved. Vendor ने बस ये आपको बना के देना है, and that's it. Another example, same thing, just arranged differently. But I think you get the picture. So again, ये सारी वही functions है जो मैं शुरू में आपको बता रहा था. So ये core के ही functions हैं सारे. These are all core functions जो मैंने आपको शुरू में वो diagram में दिखाए थे. पिछली तस्वीर में भी आया था word, मैंने कहा उसको मैं फिर भी खास लिख दूं. ये जो term है ना micro services की, जो कि एक tricky term है, इसकी ये ना double-edged sword है. Should be very careful when talking about microservices.
चीज़ बड़े मज़े की है, कोई शक नहीं, लेकिन एक चीज़ को डिप्लॉय करना अक्रॉस मल्टीपल सर्विसेज, फिर उसकी ऑर्केस्ट्रेशन, फिर उसकी एरर हैंडलिंग, फिर लेटेंसी इज़ प्रॉब्लमैटिक। और ये डोमेन है टेलीकॉम का। टेलीकॉम टॉक्स रियल टाइम, इट कैन नॉट अफोर्ड लेटेंसी। सो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि सबसे बड़ा मसला यहाँ पे यही है। मुझे डे टू डे इश्यूज आते हैं, वो बेसिकली इस चीज़ के आते हैं कि आप आर्किटेक्चर कैसे डिज़ाइन करें जिसमें आप चाहें कि जी मैं माइक्रो सर्विसेज भी रखूं, सो एवरीथिंग इज डिप्लॉयड ऑन इट्स ओन सर्विस, इट्स कम्प्लीटली लिविंग ऑन इट्स ओन, उसकी वर्जनिंग कम्प्लीटली उसकी अपनी है, उसकी इंटरफेसेस जो है वो बैकवर्ड कंपैटिबल हैं, ठीक है, खूबसूरत दुनिया है। एक सर्विस खुद से अपग्रेड हो सकती है, यानी कि आई कैन जस्ट अपग्रेड वन सर्विस, आई डोंट हैव टू अपग्रेड द अदर्स। ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली कंपैटिबल नहीं है टेलीकॉम के साथ, बिकॉज टेलीकॉम, अगर आप देखो आपकी टेलीकॉम सर्विस जब वेस्ट पाकिस्तान में आम ही वो बंद कर देते हैं टेलीकॉम को। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल टेलीकॉम सर्विस की अवेलेबिलिटी इज कॉल्ड 5 9s, ठीक है। 5 9s बेसिकली मींस 99 point, oh god, 9.999% availability. This is a requirement of telecom. What this means is कि आपका 5 9s availability होनी चाहिए आपके सिस्टम की। तो टेलीकॉम इज अ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम, इट कैन नॉट अफोर्ड टू गो डाउन, ठीक है। आप कहीं पे फंसे हुए हैं, आप गाड़ी का टायर फ्लैट हो गया, आप फोन उठाते हो, फोन नहीं चल रहा, सिग्नल नहीं आ रहा। अब या तो सिग्नल नहीं आ रहा बिकॉज खंबा ही नहीं है वहाँ पे कोई, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट इफ यू हैड सर्विसेज देयर एंड दे आर नॉट वर्किंग, ये एसएलए की वायलेशन है एंड इट कॉस्ट्स मिलियंस हूएवर इज रिस्पांसिबल फॉर इट, ठीक है। ये बहुत स्ट्रिक्ट किस्म की लेजिस्लेशन है अगेंस्ट टेलीकॉम सर्विसेज। इसलिए हमारी नींदें हराम हो जाती हैं जब 6 महीने के बाद कोई कहता है कि वो सिस्टम जो 6 महीने चल रहा था वो आज क्रैश कर गया। क्योंकि कोई क्रैश करेगा का मतलब है कि कहीं पे मेमोरी लीक हो गई है, कहीं पे कोई रिसोर्स प्रॉब्लम आई है, कुछ ना कुछ हुआ है जिसकी वजह से क्रैश कर गया। बट नाउ एवरी मिनट दैट द सिस्टम इज डाउन इज कॉस्टिंग अस। ये क्रिटिकलिटी है ऑफ टेलीकॉम सिस्टम्स। ये क्रिटिकलिटी अमूमन नेटफ्लिक्स वगैरह की नहीं होती है। मैं उस दिन नेटफ्लिक्स लगाया बैठा हुआ था, तो नेटफ्लिक्स ने कहा जी सॉरी मुझे इस वक्त कनेक्शन नहीं मिल रहा, तो मैं चुप करके चला गया था। मैं कहा चलो 2 मिनट बाद ट्राई कर लूंगा। यूजुअली फोन टेलीकॉम सर्विसेज में ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी ऑपरेटर नहीं देता आपको। वो आपको रात को उठा देगा कि ये क्या हुआ है, मेरा सिस्टम बंद हो गया। सो as an architecture, it's very nice. It solves a lot of problems, gives a lot of flexibility, but doing it the right way is hard. लेकिन यहाँ पे गेम किनके हाथ में आ गई है? That's what I want to highlight. Now the game is in the software developers' hands. Because एक एप्लीकेशन को लेना, उसको डिवाइड, उसको आर्किटेक्चर बनाना ऐसे कि वो डिप्लॉयबल हो अक्रॉस मल्टीपल सर्विसेज, और जो मैंने सारी पिछली बातें की उन सबको कंसिडर करके आपको कि अच्छा मैं इसको डिप्लॉय ऐसे करूं कि ये 5 9s परफॉर्मेंस भी दे मुझे, दैट्स अ चैलेंज। और फिर नेचुरली जब हम माइक्रो सर्विसेज की बात करते हैं तो आप सोच ही सकते हो कि इसके बिल्कुल साथ डेवऑप्स की स्टोरी आ जाती है। डेवऑप्स स्टैंड्स फॉर डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस। So you develop and you deploy, and you develop and you deploy, and you develop and you deploy, and you come back with feedback in a very loosely coupled way. Basically DevOps का concept ये है, continuous development, ठीक है। तो ये एक और कहानी है DevOps की। But as I said, ये सॉफ्टवेयर डोमेन वाले, I don't know हमारा ऑडियंस किस डोमेन से आ रहा है, so for them this should be understandable, है भी उन्हीं का एरिया। So what I want to share here is that DevOps and telecoms are getting closer together. Rather, they're already there. Continuous integration or continuous delivery is common practices. और ये सारा फिर आर्किटेक्चर कैसे enable होगा कि continuous integration and continuous development हो is the challenge. So what I wanted to share, मैं इस वक्त नहीं करूँगा, but I wanted to just give you an idea कि किसी एक ने किया है ये सारा ड्रामा, तो उसका नाम Rakuten है। ये एक न्यू ऑपरेटर इन जापान, में भी आप लोगों ने सुना भी हो। और इन्होंने बेसिकली कहा था कि हम करेंगे ही क्लाउड डिप्लॉयमेंट और ग्रीनफील्ड 5G पे। What that means is कि they have no prior history of telecom deployment. They are a brand new operator और वो सीधा 5G में गए हैं। और ना सिर्फ कि 5G में गए, उन्होंने बेसिकली सीधा क्लाउड सोल्यूशन पे गए हैं। तो वो ट्रेडिशनल उन्होंने एक भी चीज़ नहीं उठाई। अब आप जब पढ़ोगे उनकी, ये मैंने एक लिख दिया, वैसे यहाँ पे लिंक दे दिया है, आप खुद पढ़ो और आप देखो कि व्हाट एग्जैक्टली इज देयर सोल्यूशन लाइक।
how much do you think this is cloud based? यानी कि क्या वाकई उन्होंने वो जिस हम कह रहे थे ना कि वो पिज्जा बनाया उन्होंने पेपरिका और सारा कुछ अनियंस लेके और इसको हर एक का डिफरेंट लोगों से लेके बनाया या कुछ थोड़ा सा उसमें प्री प्लान्ड बेक्ड इन चीजें हैं किसी एक वेंडर की. यू कैन गो एंड चेक इट आउट. बट दिस इज अ वेरी गुड यूज केस. किसी ने अगर पढ़ना है क्लाउड के ऊपर कि किसी ऑपरेटर ने वाकई कुछ किया है, देन Rakuten is a good study considering that they're greenfield. अच्छा, ओपन रैन पे मैं अब थोड़ा सा आऊँगा. सो ओपन रैन की मैंने बात की थी, आपको बताया था कि ओपन रैन जो है ये एक नई किस्म की चीज़ आ रही है सामने, बहुत नई है. आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल हैव हर्ड ऑफ इट. इवन जो एग्जिस्टिंग ऑपरेटर्स और वेंडर्स के अंदर लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भी नई चीज़ है. आई थिंक सही तरह देखा जाए 2-3 साल पहले ही इन्होंने सही जान मारनी शुरू की है. असल चीज़ जो ये चीज़ करना चाह रहे हैं ना, इट्स नॉट टू डिफाइन टेलीकॉम इटसेल्फ बट बेसिकली मेक टेलीकॉम बिट मोर कस्टमाइजेबल. वही सोचिए अगर आपके पास क्लाउड सोल्यूशन हो और आपके पास हर चीज़ जो है वो माइक्रो सर्विसेज या इस तरह की आपकी डिप्लॉयबल यूनिट्स जो हैं वो अच्छे एग्रीगेट हुए हैं अपने अपने एरियाज में, और आप सिंपली उनको डॉकर इमेजेस बना के आप डिप्लॉय कर सकते हो. सो नेचुरली देन देयर इज एन ऑप्शन कि आप ओपन आर्किटेक्चर पे चले जाओ, राइट. तो ओपन आर्किटेक्चर का यही कॉन्सेप्ट है कि यू आर नॉट बाउंड टू एनीवन, यू आर बेसिकली डिप्लॉइंग योर ओन थिंग्स एंड उसको भी थोड़ी ऑर्गेनाइजेशन तो चाहिए होती है ना. So you can't just completely have your own solution. You still need to take the right bits and pieces to make the solution work. So basically, with that in mind, basically वही है ना, time to market increase करना चाह रहे हैं, competitiveness. It's the same story everywhere. आप एक वेंडर के पास जाते हो, आप लॉक इन हुए हो, अगर वो वेंडर आपको कह रहा है यार मैं ये आपको 4 हफ्ते में करके दूंगा आपको, या मुझे 1 हफ्ते में चाहिए, अब आप फंस गए हो. वो वेंडर कह रहा है भाई मुझे 4 हफ्ते लगेंगे बस, that's it. You have to wait. Compare this to a open solution. Basically you say कि ठीक है मैं उससे ये ले लेता हूँ, उससे वो ले लेता हूँ, इससे ये ले लेता हूँ वगैरह वगैरह, और मैं एक खिचड़ी बना के अपनी डिप्लॉयमेंट कर दूंगा. What I get, however, is that I can deploy faster and I can do something interesting. I can do something the others are not doing. वो जो हमने 4 सेल्स की बात की थी कि आपने स्मार्ट सिटी बनाना है, या आपने सेल्फ ड्राइविंग कार्स करनी है, या आपने लोगों को अच्छा नेटफ्लिक्स देना है. You can decide where do you want to go. एंड देन अप्रोप्रिएटली आपको कि अच्छा मैं इसमें कोई नई खिचड़ी पकाऊंगा और मैं कोई नई चीज़ बनाता हूँ जो ये होगी और व्हाटएवर. सो जस्ट अ वेरी वेरी क्विक ओवरव्यू कि है क्या ये ओरान. इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं वो ये मैंने ऑरेंज में ये हाईलाइट हुई हैं, और मोटा मोटा आपको समझ आ जाएगी कि बेसिकली ये मैनो बेसिकली मीन्स मैनेजमेंट नेटवर्क एंड ऑपरेशन. सो इट्स बेसिकली जस्ट मैनेजमेंट ऑफ द सिस्टम. तो इस पे ज़्यादा मतलब इट्स जस्ट बेसिक मैनेजमेंट, जो आपका सिस्टम चल रहा है और उसकी इनपुट्स आ रही हैं बाहर से, ऑपरेटर कॉन्फ़िगर कर रहा है, पॉलिसीज डिफाइन कर रहा है, कॉन्फ़िगरेशंस हैं, सो ऑन. सो बेसिक मैनेजमेंट. इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस वन हियर, बिकॉज ये जो है ना रिक इंटेलिजेंट कंट्रोलर, ये एक्चुअली बात कर रहा है ओवर वेल डिफाइंड इंटरफेसेस विद योर रैन. ये पूरा रैन है इस वक्त. ये हमने बात की थी ना कोर की और रैन की, इसमें अब कोर कहीं नहीं है, इसमें सिर्फ रैन है. और आपको ये नज़र इस तरह से आएगा कि ये देखें RRC प्रोटोकॉल हमने देखा था, हमने PDCP देखा था, STAP को भी छोड़ दें, ये भी एक प्रोटोकॉल है डाटा ट्रैफिक के लिए 5G के अंदर. PDCP आ गया, ये RLC आ गया आपका, ये MAC आ गया, ये FAIA आ गया जो हमने पहले सारी देखी थी चीज़ें, ये FILO आ गया, रिमोट जीरो. सो एग्जैक्टली वही चीज़ें सारी जो मैंने आपको शुरू में एक्सप्लेन की थी. ये एंटेना आ गया, यहाँ पे यूजर बैठा हुआ है और वो एंटेना से कनेक्ट हो रहा है. लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो उन्होंने डब्बा बनाया है उसके साथ का एक और यूनिट है जो इस डब्बे के अंदर चल रहा है, और ये हर हर वेंडर जो है ये अपनी इम्प्लीमेंटेशन में ऐड करेगा, और जब वो ये ऐड कर देता है तो वो ORAN कंप्लायंट हो जाता है, और जब वो ORAN कंप्लायंट हो जाता है तो वो ORAN की ये सारी फैसिलिटीज के साथ कनेक्ट हो जाता है. एंड दैट इज वेयर द फन स्टार्ट्स, बिकॉज नाउ सडनली आप अगर लेट्स सपोज आप में से कोई ORAN में जॉब करना चाह रहा है या ये ORAN की तरफ देखना चाह रहा है कि है क्या, यू डोंट नीड टू नो द टेलीकॉम डोमेन. ठीक है, ये आपको समझने की जरूरत नहीं है. well, ऑब्वियसली कुछ तो समझना होगा आपको, बट यू डोंट हैव टू गो इनसाइड द प्रोटोकॉल स्टैक्स. आप हायर लेवल पे हैं और आप हायर लेवल पे ये चीजें डिफाइन कर रहे हैं जो यहाँ लिखी हुई है. फॉर एग्जांपल क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या है, बट नाउ यू टॉकिंग डायरेक्टली इनसाइड द रैन. ठीक है, ये पहले नहीं होता था. पहले ये जो यूनिट था ना ये भी वेंडर का अपना होता था, रादर कहना चाहिए अभी है. ये चीज़ें वेंडर अभी खुद कर रहा होता है. मैं खुद इस पे जो काम कर रहा हूँ, मैं फॉर एग्जांपल मेरा ये एरिया है मोबिलिटी मैनेजमेंट का,
तो ये दिस आई एम वर्किंग ऑन दिस माई सेल्फ, बट ये टुमारो क्या होगा कि अगर कल को ये रैन कंप्लाइंट हो जाता है तो फिर ये काम एक और बंदा भी कर सकता है जो मेरे कंपनी में ही नहीं है। हो भी सकता है, नोकिया भी ये काम कर सकती है, बट कहने का मतलब है कि नाउ समबडी एल्स नीड्स एक्सेस टू माय डेटा व्हिच इज हियर, और उसको यूज करके वो जो बना। और सबसे इंटरेस्टिंग टर्म ये है यहाँ पे, और जो भी AI ML में काम करता है उसको समझ आ गई होगी मैं कहाँ जा रहा हूँ इसके साथ। अगर आपके पास डेटा आ रहा है आपकी नेटवर्क से, एंड नाउ आई डोंट मीन ये वाली नेटवर्क, ये यूजर की नेटवर्क, आई रियली मीन इनसाइड। ये मेरे जो सीनियर्स है ना कुछ जो आई एम कमिंग फ्रॉम नस्ट, सो वो सीनियर्स मेरे से कभी कभार पूछते रहते हैं कि यार तुम यहाँ काम करते हो, तो हमने ना वो यूजर का फलाना इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना है, तो हम बैठे यहाँ पे हुए हैं, ठीक है, दे सिटिंग हियर एंड दे वांट टू गेट समथिंग फ्रॉम हियर। मैं कहता हूँ यार भूल जाओ, कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि ये वेंडर का एरिया है, वेंडर कभी भी ये चीज़ें बाहर नहीं फेंकेगा। बट नाउ इमेजिन कि ये दरमियान में आता है और वो कहता है कि जी आई नीड दिस इन्फॉर्मेशन फॉर माई थिंग, लेट्स सपोज उसने ट्रेनिंग करानी है किसी चीज़ की, कहता है मुझे ट्रेनिंग के लिए ये चीज़ें चाहिए, नाउ देयर इज एन इंटरफेस, नाउ देयर इज अ पॉसिबिलिटी। सो दिस इज वेरी एक्साइटिंग कि आपके जो ऑपरेटर्स हैं या जो लोग बाहर बैठे हैं, इवन रिसर्चर्स जो हैं, वो कहते हैं कि यार इस वक्त पाकिस्तान में क्या डिप्लॉयमेंट्स हुई हैं या किसी सिटी में क्या डिप्लॉयमेंट्स हैं, वहाँ का ट्रैफिक प्रोफाइल्स क्या हो रहे हैं, कितने लोग इस वक्त क्या करते हैं, और अगर ऑपरेटर या वेंडर आपको डाटा नहीं देता तो आप अपना मॉडल यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हो एंड यू कैन यूज दैट, एंड दैट इज रियली एक्साइटिंग। तो इस पे मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा, ये क्या चीज़ है। तो बेसिकली दिस इज दिस मैंने बताया आपको इंटेलिजेंट कंट्रोलर है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि बेसिकली इट हैज़ अ लॉट ऑफ डेटा दैट इट कैन गेट फ्रॉम E2, एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से अ लॉट ऑफ डेटा, दिस इज रियली अ लॉट ऑफ डेटा, ठीक है, रियल टाइम डेटा। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं जो हूँ ना इस वक्त यहाँ बैठा हुआ हूँ, सो मेरा प्रोफेशनल काम जो है ना वो यहाँ पे है, ठीक है। मैं हमारा जो ये यूनिट्स हैं नोकिया के अंदर, वी कैन हैंडल थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स, ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स पर आवर। अब आप इमेजिन करें आपको पूरे दिन का रिकॉर्ड चाहिए, तो यू कैन रियली गेट अ लॉट ऑफ डेटा। वो यूजर्स आए, उन्होंने क्या किया, वो किस तरह क्या, मतलब नाउ आई एम टॉकिंग इंटरनल्स रेडियो, ठीक है, वो ये नहीं कि उन्होंने कॉल की और कॉल करके चले गए, दैट्स आल्सो इंटरेस्टिंग ऑफ कोर्स, बट इंटरनल्स ऑफ द सिस्टम। मैं इस वक्त डिटेल्स में नहीं जाऊंगा बिकॉज वो फिर इट गेट अ बिट बोरिंग, बट कहने का मतलब है कि नाउ यू सडनली हैव एक्सेस टू ऑल दीज यूनिट्स एंड यू कैन आस्क देम डाटा एंड देन यू कैन डू योर ट्रेनिंग एंड इन्फ्रेंस, और उसके बेसिस पे यू कैन मेक वेरी इंटरेस्टिंग डिसीजंस and you can feed those decisions back into the system, and that way you have built an intelligent radio. पर ये चीज पहले नहीं होती थी, मैं तो कहूँगा अभी भी नहीं हो रही, but this is where it's going. और आप latency देखें, which is again I mentioned very important, कि अगर आपने कुछ काम लो latency पे करना, आप even यहाँ पे कर सकते हैं, but you have the possibility of working under that latency. So imagine करें कि आपका जो data की inference है वो milliseconds के अंदर can change the dynamics what's happening at real time, and that is really powerful. So ये RIC जो है ना, this is very fascinating, और I do encourage कि जो इस पे जो इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं कि वो इसको स्टडी करें। अच्छा, मुझे टाइम का आइडिया नहीं है, I'll just keep going on and on and on. So I think मेरे पास अभी still 10 minutes की slide set है, so please just interrupt me if you want me to stop at some point. So मैं एक और चीज़ इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा बिकॉज ये टर्म आजकल बहुत हॉट हो रही है, इट्स कॉल्ड मल्टी एक्सेस एज कंप्यूटिंग। सो बेसिकली एज कंप्यूटिंग कह लें इसको आप ई के नाम से, और ये इसलिए पॉपुलर हो रही है बिकॉज व्हाट यू आर डूइंग इज़ कि आप अपने रेडियो के बहुत करीब आके बैठ जाते हैं। वो जो मैंने आपको प्रोटोकॉल की फ्लेक्सिबिलिटी की बात की थी ना, बेसिकली ये उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है। आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ दिस। ये एग्जांपल आ गई है कि हाउ इज इट यूज्ड। सो यूज केस बड़ा सिंपल सा है, ये आपकी रोड है, ट्रैफिक है, आई थिंक लोगों ने किए भी हुए हैं, ये आपकी वीडियो एनालिटिक्स चल रही है। जब नॉर्मली क्या होता है कि वीडियो एनालिटिक्स जो है वो किसी न किसी चीज़ से कनेक्टेड तो होगी ना, या खाली यहाँ पे आइसोलेटेड तो नहीं बैठी हुई, so it needs to be connected to something. So what they're saying basically is कि let's assume कि इसने analytics में inference खाली नहीं करना, इसने training भी करनी है। अब अगर training करनी है ना तो it needs data to be sent back. That training needs to happen somewhere. और जो लोग training data इस तरह के काम करते हैं, आई में they know कि this is expensive. ठीक है, आपको compute power चाहिए उस ट्रेनिंग के लिए, आपको टाइम भी चाहिए उस ट्रेनिंग के लिए, बट रियल टाइम डाटा आ जाए आपके लिए तो even that's even more interesting depending on the type of AI model you build of course. But यहाँ के एग्जांपल सिर्फ इतनी सी है कि अगर आपकी कंप्यूट पावर इज क्लोज टू योर कैमरा
तो naturally the type of data you are able to get and the kind of computation you can get and the kind of results you can give back, ये loop छोटा पड़ जाता है. And since ये loop छोटा पड़ गया है, आपकी overall performance of the system improve कर जाती है. और अगर ये दूर कहीं चला जाता है तो आपका ना सिर्फ कि डेटा एक्सपेंसिव पड़ेगा, उसको हर दफ़ा यहाँ भेजना और फिर हर दफ़ा वापस मंगवाना. दिस विल बी, जितना लॉन्ग होगा उतना उसमें डिले भी आएगा. बट रादर दिस इज मच मोर, आपकी ये जो डिप्लॉयमेंट है वो आपके बिल्कुल करीब हो, समवेयर वेरी क्लोज बाय. और उस तरह से ये जो एज कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट है वो यही है कि योर सिस्टम बेसिकली हैज एलोकेटेड रिसोर्सेज एट द एज ऑफ द सिस्टम एंड नॉट एट द बैक एंड. और उस तरह से आपके पास लेटेंसी और डिसीजन मेकिंग टाइम जो है वो बहुत रिड्यूस हो जाता है. एंड दैट वे योर एंड डिवाइस बिकम्स मोर स्मार्ट. तो जस्ट एज एन एग्जांपल ये है. तो देयर इज लॉट ऑफ एग्जांपल्स. आप ये एज कंप्यूटिंग को आप सर्च करेंगे तो यू विल फाइंड वेरी इंटरेस्टिंग यूज केसेस. और टेक्निकल एलिमेंट्स में ऑफ कोर्स आईओटी के बगैर तो बात ख़त्म नहीं हो सकती. सो 5G भी आईओटी के साथ घुसा हुआ है. और वो जो मैंने आपको ट्रायंगल दिखाया था शुरू में, उसमें आपको याद होगा कि उसमें आईओटी भी थी. सो आईओटी जो थी वो आई बिलीव इस तरफ बैठी हुई थी. लेकिन मकसद कहने का ये है कि 5G ऑब्वियसली आईओटी की बहुत सी और, वही जो हमने पहले बात की कि लोरा है, सिगफॉक्स है, सो मेनी अदर ऑप्शंस जिस पे आप आईओटी, इवन एलटीई पे आप नैरो बैंड एलटीई है उस पर भी आईओटी कर सकते हैं. पॉइंट इज कि दिस इज अ सिंगुलर सोल्यूशन. दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग. आपकी वन टाइम डिप्लॉयमेंट है, एक टेक्नोलॉजी है और एक टेक्नोलॉजी पे आप सर्वाइव कर रहे हैं. सो 5G इज द ओनली थिंग यू नीड बेसिकली, एंड देन यू कैन फिगर आउट कैसे आपने इसको कैसे यूज करना है. Naturally it's not that straightforward, but basic premise यही है कि जब आपके पास एक end product बन गया है जो कि configurable है in different ways, then obviously it's much more powerful than a very specialized solution. But of course people are using specialized solutions. Sigfox is doing exceptionally well because it's a very specialized solution which people are using it exactly for that. But 5G will probably be much more widely deployed than Sigfox, at least at this stage it is. So let's see कि ये रेस टू आईओटी कौन जीतता है. बट आई थिंक वी जस्ट इन द बिगिनिंग फेज. तो ये थोड़ी सी है कि पोटेंशियल क्या है और किस चीज़ में 5G का वो इस वक्त यूज केसेस देख रहे हैं. और लेट्स सी हाउ दिस थिंग डेवलप्स फर्दर. और ये फिर वही मैं अभी बात कर रहा था कि ये 1 5G नेटवर्क कैसे सारा कुछ सपोर्ट करता है. सो नाउ इट गेट्स, ये सारी चीज़ों को जोड़ने वाली एक बात है. हमने क्लाउड की बात की, वो यहाँ पे बैठा हुआ था, राइट. हमने मोबाइल एज कंप्यूटिंग की बात की, वो एज पे आ गया. फिर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ 5G की बात की, वो आपकी ये बैठी हुई है पीछे सारी. लो लेटेंसी, मशीन टू मशीन, ये वो आपकी स्मार्ट सिटी टाइप, आईओटी टाइप, मोबाइल ब्रॉडबैंड, एनीथिंग एल्स. ये हाई स्पीड ट्रेन है. हम यहाँ को पता है बुलेट ट्रेन होती हैं 450 किलोमीटर पर आवर पर जा रही होती हैं, 500 किलोमीटर पर आवर पर जा सकती हैं. वहाँ पे आपकी आईओटी नहीं चलेगी, इतनी स्पीड को वो हैंडल नहीं कर सकती. यू नीड कंप्लीटली डिफरेंट प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंटेशन. 5G कैन डू दैट. वो डिजाइंड है इस तरह की चीज़ों के लिए. अब इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट आ गई है, उसमें वाईफाई के थ्रू कर रहे हैं वो. कल को 5G भी, वो उस पर भी 5G पे जा रहे हैं. सो बेसिकली व्हाट इट डज इज कि ये आपकी एक नेटवर्क है, ये एक ऑपरेटर है, और वो क्या करता है कि वो अपनी 5G नेटवर्क को स्लाइसिंग कर देता है उस नेटवर्क की. अच्छा, कल को वो ये भी कर सकता है कि ये जो है ना, ये वाली डंडा जो जा रहा है, वो कहे कि यार ठीक है, ये जो है ना, ये लेट्स से मैं किसी एक प्राइवेट कंपनी को बेच देता हूँ. दैट प्राइवेट कंपनी कैन ओन दिस पार्ट ऑफ द 5G network of the operator, and the operator will not have anything to do with that, ना डेटा से, ना उसकी किसी और चीज से, सिवाय उस नेटवर्क की मेंटेनेंस. सो नेटवर्क ऑपरेटर के पास एक नई किस्म की मार्केट आ गई है कि वो कहता है अच्छा आपने चीज करनी है, आप क्या दिक्कत करोगे ये सारी नेटवर्क डिप्लॉय करने की, मैं आपके लिए डिप्लॉय कर ही रहा हूँ ना, आप मुझसे ये स्लाइस खरीद लो. एंड सडनली यू गेट अ वेरी डेजिग्नेटेड सोल्यूशन. इसी तरह आप देखो, अब आप आपके यूनिवर्सिटी वालों ने ये टीम MS टीम्स का आपको ऑप्शन दिया है, या उन्होंने आपको whatever, I mean MS Office, whatever, so they give you some kind of packages and you say ठीक है ये आपका पैकेज है, ये यूनिवर्सिटी का पैकेज है. अब कल को उसमें क्लाउड सर्विसेज आपको ऑफर होती हैं, आपके पास क्लाउड स्टोरेज आ जाती है. अब क्लाउड स्टोरेज में आपके पे डाटा स्टोरेज आ जाती है. डाटा स्टोरेज आपका डाटा क्रिटिकल है. So you will have security concerns and privacy concerns, and you will say कि ये data जो should not be anywhere else, and cloud के ऊपर वो भी scary. फिर आपको वो SLAs देंगे, कहेंगे नहीं जी cloud is very secure and all that stuff. It's exactly the same story with
now with your network. अब आप टेलीनॉर के पास जा सकते हो और आपसे कह सकते हो कि ये वाली जो आपने टेलीफोन कनेक्शन या जो हवा में आपके सिग्नल्स जा रहे हैं, इसका मैं ये सबसेट पूरा का पूरा ले रहा हूँ. इट्स लाइक वो एक उसका होता है, वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर्स भी होते हैं, MVNOs कहते हैं उनको. वो खुद से एग्जिस्ट नहीं करते, वो सिर्फ सर्विसेज ले लेते हैं किसी एक बड़े ऑपरेटर से, और वो बेसिकली उनकी वेवलेंथ पे, उनकी सॉरी उनके स्पेक्ट्रम पे ना कैंप कर लेते हैं. तो वो पाकिस्तान में आई डोंट थिंक ऐसा किसी के पास है, बट यहाँ पे बहुत कॉमन है. यहाँ पे जो हमारा सुपरमार्केट है, इवन उसने अपना टेलीफोन कनेक्शन बेचने के लिए रखा हुआ है. बट हियर इट्स अ बिट मोर, because here you आपने स्लाइस बनाया है, उसमें आप एक बड़ा स्पेसिफिक पैकेज ऑफर कर रहे हो. So you're saying I want to offer machine to machine, या I want to offer low reliability, like let's say आप अपने यूनिवर्सिटी कैंपस पे इलेक्ट्रिक कार्स डिप्लॉय कर देते हो जो सेल्फ ड्राइविंग है, right? You need a very special type of deployment. You don't need a mobile broadband. You don't care for that. You want low latency. तो अब आप खुद सारा डिप्लॉय करोगे, तो आप खंबे भी अपने खुद लगाओगे, आप मैनेजमेंट भी खुद करोगे. That's a lot of work. So instead you go to Telenor, you go to Ufone or Mobilink or whatever, and you say, यार ये मुझे, I need this. And 5G ये slicing का concept basically उस तरफ जाता है कि then you can slice out that network and give it to somebody for private usage. Very good. अच्छा जी, मेरे इसकी बैटरी लो हो रही है. Just give me 1 second. इसको connect कर दूँ. So this is probably the most interesting picture from a student's point of view, because यहाँ पे अब companies के नाम आ गए हैं. So what look for? Who's doing what? इस पिक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए ना आपको लेफ्ट टॉप लेफ्ट पे जाना पड़ेगा. ये आपके ऑपरेटर्स हैं. सो ऑल ऑफ दीज आर ऑपरेटर्स. ठीक है, ये जो आपका है, ये आपकी कंपनीज हैं. एवरीवन नोज दीस, सो मैं कुछ एक सेकंड भी नहीं जाया करूंगा. ये आपके वेंडर्स हैं. इनमें भी आपको कुछ के नाम पता होंगे, मे बी कुछ के नाम पता हो, बट दीज आर बिग वेंडर्स. फॉर सम रीजन Huawei का नाम नहीं है, व्हिच इज वेरी ऑड, बट ओके. व्हाट्स हैपनिंग इज, ये देख रहे हैं आप वेब डायग्राम जो बन गया, ये मेरे नहीं ख्याल में, मैंने सोचा था आज से 3-4 साल पहले कि ये होने वाला है कि अजूर दरमियान में बैठा होगा, या गूगल दरमियान में बैठा होगा, या AWS दरमियान में बैठा होगा. Who would have imagined कि they will come and sit in the middle, क्योंकि ये लोग throughout 25-30 सालों से they have been doing business directly with the operators. So Nokia would talk directly with Verizon, या with whatever, Orange. ये suddenly दरमियान में AWS कहाँ से आ गए? But this is what the cloud is doing. ये सारा कुछ is the magic of the cloud. And you see there, edge computing, edge computing, edge computing, edge computing, edge computing. कहाँ जा रहा है सारा? Azure में जा रहा है. कहाँ जा रहा है? AWS में जा रहा है. Cloud में यहाँ पे जा रहा है. Google Cloud में जा रहा है. लेकिन मैं इसको अगर erase करूँ, तो आप ये भी देखें कि क्या चीज़ें अभी थोड़ी सी मिसिंग है. आपको नजर आ रहा है यहाँ सारी तरफ कोर 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 कोर. यहाँ पे थोड़ा सा रैन है. कोर 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 कोर, थोड़ा सा रैन है, MEC है. ये तो एज कंप्यूटिंग है. कोर पे बहुत जोर है, रैन पे नहीं है. और रैन पे इसीलिए नहीं है बिकॉज रैन इज वेरी डिफिकल्ट टू अचीव विद दिस काइंड ऑफ करंट डिप्लॉयमेंट. इसलिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आज से 1-2 साल बाद कि सडनली यहाँ पे रैन की जॉब्स आनी शुरू हो गई हैं, बिकॉज दैट्स वेयर दे वांट टू गो नेक्स्ट. उन्होंने ऑलरेडी कोर का बिजनेस तो संभालना शुरू कर दिया है. डिप्लॉयमेंट के लिहाज से कल को हो सकता है वो रैन का भी संभालने की कोशिश करें. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग आउट फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स. मुझे एक जॉब ऑफर आई थी AWS से, और मैं थोड़ी देर के लिए दंग रह गया था कि ये क्या काम करने जा रहे हैं. और वो इसी तरह का था. बेसिकली वो उनको नेटवर्क टेलीकॉम का बनना चाहिए था. एंड यू वुड वंडर कि AWS का टेलीकॉम से क्या ताल्लुक है, बट मतलब दैट्स वेयर दे आर गोइंग. सो मेरे लिहाज से दिस एज ऑफ द हाइपरस्केलर्स जो है, दिस विल चेंज द डायनामिक्स. और आपको पता है इनके पास पैसा कितना है और उनका इन्फ्लुएंस कितना है मार्केट के अंदर. सो ये अगर सारे चिपक गए इनके साथ, जो कि ऑलरेडी चिपके हुए हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज इनके कितनी नेटवर्क्स हैं जिसके अंदर ऑलरेडी ये लोग डिप्लॉयड होंगे. मेरे पास का बैकग्राउंड नहीं है, बट आई एम क्वाइट श्योर जिस तरह आप लोगों के साथ भी डेली यूजेज में आ रही हैं चीज़ें. सिमिलरली ये अगर इनको कट आउट कर दिया इन दोनों ने, तो फिर ये सारे तो मतलब दे विल हैव टू वर्क विद देम. देयर इज नॉट मेनी ऑप्शंस लेफ्ट. एंड इंटरेस्टिंगली आप देख लो यहाँ पे सिर्फ 3 ही है. अब अगर मैं आपसे पूछूं और कौन होगा चौथा पांचवा जो यहाँ पे आएगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आंसर दैट क्वेश्चन. चाइनीज कंपनीज हैं कुछ, बट आपको पता है चाइनीज कंपनीज वर्किंग आउटसाइड चाइना इज डिफिकल्ट. सो हाउ दैट रियली वर्क्स आउट. बट nevertheless, इस वक्त जो हम देख रहे हैं, there's not a lot of companies entering this space. So it's actually also a possibility, it's an area to get into. But
It's not an easy place to go. Okay, where do we go from here? New customers, new solutions being asked for. मैंने आपको बताया कॉर्पोरेशंस अपने सॉल्यूशंस 5G पे डिप्लॉय कर सकती हैं, प्राइवेट वो खुद से डिप्लॉय कर सकती हैं, या वो कल को कह सकती हैं किसी ऑपरेटर से कि मुझे स्लाइस दे दो, उस पे काम कर लेते हैं. और करंटली जो सबसे बड़ा काम है वो MECs पे चल रहा है, वो जो एज क्लाउड की बात हुई थी. बट इसमें दो चीज़ें आप देख रहे हैं, दोनों बहुत बड़ी बड़ी हैं. एक तो एज पे डिप्लॉय करना, वो जो प्रोटोकॉल की फ्लेक्सिबिलिटी है, और दूसरा क्लाउड का होना. दिस इज ऑल्सो ट्रिकी पार्ट, बट दिस इज वेयर द फ्यूचर सीम्स टू बी हेडिंग 5G के पर्सपेक्टिव से एटलीस्ट. तो ये जो ऑन प्रेमिस किस्म की है, वो बॉश की यहाँ पे एक लैब है स्टुटगार्ट में. अब वो बॉश के लैब वाले कह रहे हैं कि हमने अपने पूरी लैब में 5G लगानी है. अब उनकी बड़ी बड़ी मशीनरीज हैं, रोबोट्स हैं उसके अंदर एंड व्हाट नॉट. वो कहते हैं सारा कुछ हमने 5G से कनेक्ट करना है, और हमें उसकी फिर वो सारी वो चाहिए, ऑपरेबिलिटी चाहिए, क्योंकि हमने कल को उसमें AI भी डालनी है, पता नहीं क्या क्या डालना है. और वो जो मशीन्स हैं वो उनकी कैमराज होंगे और वो खुद से चीज़ें फिगर आउट करेंगे. और all that data, they want to have private data, they want to have private deployments, and they want to use 5G. ये भी अब उस भी इंटरनेट पे देख लीजिएगा. और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हाइपर स्केलर्स आ जाते हैं गेम के अंदर. तो अब मैं बस I'm just going to connect all of this. पीस द रेजिस्टेंस जो है सबसे बड़ी जो चीज़ है अब सारी कहानी में जो हमने अब तक देखी है, अब आप समझ गए होंगे ऑलमोस्ट कि हम कहाँ जा रहे हैं. एंड दैट इज बिग प्लेयर्स मेकिंग बिग इकोसिस्टम्स. ये आप देखें IBM क्लाउड फॉर टेलीकम्युनिकेशन इकोसिस्टम पार्टनर्स. ठीक है, IBM क्लाउड, प्लीज कीप दोस टू टर्म्स इन माइंड. IBM का टेलीकॉम से कोई ताल्लुक नहीं था, क्लाउड से फिर भी था, बट दे हैव क्रिएटेड दिस काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स एंड पार्टनरशिप्स एंड इकोसिस्टम्स. आप देख रहे हैं उसके अंदर कर क्या रहे हैं. IBM जाएगा जिस तरह हमेशा से करता है, वो एक कंसल्टेंसी देता है, वो एक ऑफर देता है किसी एक बॉडी को, किसी एक ऑपरेटर को, किसी एक कंपनी को, और वो ये सारी चीज़ों को ना मिक्स एंड मैच करके उनको ऑफर कर देगा. और आप ये देखो, इसमें मैं नोकिया को दिखाऊं आपको, तो नोकिया इज इन टू डिफरेंट थिंग्स. ठीक है, यहाँ पे भी घुसी हुई है कोर में नेचुरली, क्योंकि ये नोकिया की प्रीवियस स्ट्रेंथ्स हैं. बट यू सी देयर सो मेनी अदर एरियाज जहाँ पे अब ऑपरेटर्स आपको कम नजर आ रहे हैं, वेंडर्स कम नजर आ रहे हैं, आपको नए नए नाम नजर आ रहे हैं. सो दिस इज स्टिल अ टेलीकम्युनिकेशन डोमेन, but the players are not necessarily telecom oriented. गेमिंग इंडस्ट्री को आप देखो, अब गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर नोकिया यहाँ पे बैठा हुआ है. ये 5G वैल्यू चेन की बात हो रही है इसके अंदर. तो 5G गेम्स, 5G के थ्रू गेम्स कैसे डिप्लॉय हो सकती हैं और प्ले की जा सकती हैं रियल टाइम पे ओवर फोन्स, दैट्स द बेसिक स्टोरी. और आप देखो इसमें कितना बड़ा इकोसिस्टम डेवलप कर दिया. ये यूजर यहाँ बैठा हुआ है, उसको पता भी नहीं है पीछे चल क्या रहा है, लेकिन ये सारी गेम जो है उसमें आप सब घुसे हुए हैं. सो and why is this happening? इसीलिए because the kind of experience these guys are getting at the end, this has changed dramatically with 5G. I mean, the amount of traffic we're talking about that can be handled, जो density की हम बात कर रहे हैं, जो हम services की बात कर रहे हैं, verticals की बात कर रहे हैं, that is much more rich than it was ever before. So all of these people see something in it for them. और आप देखो गेमिंग इंडस्ट्री खुद कह रही है कि मुझे 5G के अंदर जाने के लिए कौन कौन चाहिए और मैंने करना क्या है. So they're actually investing in these kind of markets. So it's कभी कभार बहुत ही overwhelming लगता है, लेकिन that's where it is. And just to say where we are right now. So today we are still talking release 15. So we're still very very early in this 5G game. ये 5G के release 15 की primary features हैं. और आप देख सकते हैं कि most of the things जो कि हमने बात की, like ये V2X means vehicular to X, so vehicle to anything communication. इस पे ऑलरेडी कुछ वाईफाई का भी आई थिंक स्टैंडर्ड है जो V2X के लिए है. फिर ये NR IoT, ठीक है, ये URLLC जो सॉरी मैंने उसको कवर ही कर दिया. ये दिस इज बेसिकली लो लेटेंसी, या आपका कोई रोबोट है जो कि लो लेटेंसी जिसको चाहिए. ये रिलीज 16 में आएगा. तो रिलीज 16 is still a little bit in the future. I think एक दो साल और लगेंगे अभी. इसकी स्पेसिफिकेशन हो रही है, सो भी डेवलपमेंट स्टेज पे नहीं आया. और रिलीज 17 तक आप मतलब as an end user you probably will be like too far away. It's really going to change some fundamentals कि आपका end user experience ही improve हो रहा होगा, but technological perspective से this is getting really मतलब
काफी बड़े changes हैं, let's say, when it gets to this point. And let's even see if they get to this point, because ये 6G की बात मैंने अगली स्लाइड पे यही लिखा है कि 6G जो है वो तो मैंने जिक्र ही नहीं किया अभी 6G का, but that's also in the work. So it could be कि हम किसी एक पॉइंट पे 5G को कहें stop, because हर चीज जो है ना वो एक टेक्नोलॉजी के साथ नहीं हो सकती. That's stretching it too much. So basically at some point you realize कि अच्छा कोई fundamental चीज है जो आपकी bottleneck बन जाती है. So far they haven't found something explicitly, but 6G की स्टोरी जो डेवलप हो रही है वो इसी तरह हो रही है कि 5G की लिमिटेशंस कहाँ पे आ रही हैं, किन चीज़ों में है, और क्या 6G. अब फॉर एग्जांपल वो जो कोरोना की जो कहानी चली थी कि वो वैक्सीनेशन के अंदर जो है वो चिपसेट पता नहीं क्या डाली हुई है, वो क्या हो रहा है और क्या हो रहा है. नेचुरली आप सोचें अगर थ्योरेटिकली कि अगर दैट सच अ थिंग वुड एवर एग्जिस्ट, उसका रेडियो का साइज क्या होगा, राइट? अगर उसे ट्रांसमिट करना है कुछ तो उसने ट्रांसमिट करने के लिए उसको रेडियो चाहिए, तो उसको रेडियो चाहिए तो वो कितना छोटा रेडियो होगा कि वो बॉडी के अंदर एग्जिस्ट कर सकता है इतने छोटे से मतलब सोल्यूशन के अंदर. और फिर ये कि वो सर्वाइव कर रहा है उसके अंदर, बॉडी के अंदर, और उसकी पावर कहाँ से आ रही है और उसकी डिसिपेशन कितनी है पावर की. इट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स. तो मतलब नॉट एवरीथिंग कैन बी सॉल्व्ड विद व्हाट टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट टुडे. दैट्स व्हाई ये टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती हैं. 1G आया, 2G आया, 3G आया, 4G आया. दे आर फंडामेंटल चेंजेस देयर व्हिच मेक द अदर थिंग मच मोर अट्रैक्टिव. सो 5G के लिहाज से भी I would still say कि हम maybe we're somewhere like 30% perhaps at this stage. Release 16 would be the big thing जब ये आएगी, which अभी इसको हैं 3-4 साल. So anyone who's interested in 5G still has a lot of time to catch up and get into this industry. So I am going to summarize एक ही slide के अंदर जितनी मैं best कोशिश कर सकता हूँ, but I know this was quite a journey. So I just want to say new architecture, most important thing for engineers. A new architecture always gives chance to new possibilities. So that is very exciting all the time. And that is the primary reason why 5G has become such a big thing, because new architectures जो है certainly flexibility बहुत से दे रहा है. ये जो IT cloud को हम bridge कर रहे हैं, that is a big thing for the telco. This should not be taken lightly. So anyone interested in this field should consider कि खाली IT industries को या IT companies को देखने की जरूरत नहीं है. आप even telco domains को के अंदर घुस सकते हो through this. The companies बहुत सी नई आ गई हैं. So मैंने पिछली साइड्स में दिखाया था, there were many companies जो कि पहले नाम उनका सुना भी नहीं होगा किसी ने, and suddenly they have become big players because they are cheaper, they are doing things which is more, let's say, today. So नई चीजें हैं और वो from scratch कर रही थी, so they were able to get it done faster and quicker. जो बड़ी कंपनीज होती हैं अमूमन उन्हें चेंज करना थोड़ा टाइम लगता है, चेंज मैनेजमेंट थोड़ी स्लो होती है, so it's a bit difficult. So many things happening, and if you want to get again into this field, then new entrants is always a good place to go because they are looking for fresh people and they're looking for new thinking. But you have to prepare yourself for it, for a telecom kind of mindset. It's not an IT mindset, but technology-wise, it's similar. ये मेरी अपनी prognosis है कि 2 to 4 years में, at least from an internal telco perspective, I think things will change dramatically. So it's a very exciting time to be in the game, but at the same time, it's a lot of work because ये जो change phase होते हैं ना, आप लोगों को अपनी जिंदगी के experience से पता होगा, किसी चीज में change करना जिसमें आप set हो और now you have to get out of it and learn new things and adapt again. It's very tough, very hard to do. But for people who are willing to put it up, I think it's a very good time to get into it. So I think I'll wrap up with that. GPT की बात हुई और किलर ऐप, किसी के पास कोई ज़बरदस्त आइडिया हो कि 5G पे क्या हो सकता है जो कि अभी तक नहीं हुआ. सो मैं तो जहाँ भी प्रेजेंटेशन देता हूँ और जहाँ पे भी ये बात होता हूँ हमेशा एंड इसी पे करता हूँ कि यू वांट टू गेट रिच फास्ट, गो थिंक ऑफ अ किलर ऐप. नई व्हाट्सएप की चीज़ बनाओ, कोई जो व्हाट्सएप वालों ने बनाई थी वैसी कोई चीज़ सोचो जो 5G पे एप्लीकेबल हो, एंड सडनली यू विल हिट इट बिग. व्हाट्सएप इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. उनकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज कंप्लीटली something nobody expected. So उन्होंने Erlang use की थी, Alexa use की थी, which is a functional programming language. Nobody was kind of thinking कि वो इतनी would be a big solution for such a 50 बंदे की company थी वो, and they managed, right, because they came at the right time with the right application and did the right things, solved the problem. Of course we can always say Skype क्यों नहीं कर पाया और Viper क्यों नहीं कर पाया और ये सारे जो companies थे वो क्यों नहीं कर पाए, but thing to be said is कि killer app is still a killer app. So technology जो आती है नहीं तो वो killer app is looking for a killer app which everyone wants to have. Okay, 6G, maybe another day. So that's the end of my presentation.
I would hand it back to you guys then. Amazing, amazing. It was a roller coaster and a little overwhelming, but yet amazing that we got to know that the whole game is changing, that the Bing's vendors and all that, Google and cloud and all that people are coming in the game, which are basically not really related to the telecommunications. So that's a big game, and we didn't think about it. Generally, people don't know about it in the back end. We are using internet. Generally, we are doing everything with the internet, but we don't know that what's actually happening in the back end. So it's quite amazing to see, and I'm actually interested in telecom because I never had a really close interaction with any of the telecommunications and IT background. But now, like, I'm trying to get into interested as an entrepreneur. That there's a huge game coming in for entrepreneurs here. We can get the big deal out of it once we can find the solutions between those big vendors and companies. There would be the big game coming in. But it would also be quite expensive currently. So we will need a person who is basically quite knowledgeable in that field and who can explain it in a simple ways, just like you did, because I didn't have any idea what communication was, what core was, and I was just learning it in the big time. So I could get the things which I never heard of. Those all the bag radio and core, and these all are the things that basically we generally don't talk about it. So I would love to have a webinar with you on basics of all those telecommunications. There's a course that we talked about, so that normal people generally, I want normal people to read it, because the people who are well versed are already in this game, so they can take it out. But if what I want this to reach to the normal people like me, who are not really well versed in the telecommunication, if they could get it, so I would like a webinar on the basics of it, that all those basics which can help us to really understand these bootcamp in more efficient way, so that we can interact more. I think Ifat Maiman have the questions. Ifat Maiman. Yes, you raised your hand. You can go ahead. Ifra. Okay, Ifra. It's Ifra. Ifra, you can go ahead. You have raised your hand. Assalamu alaikum. I'm Ifra Komal, and I am working in Telenor as a resident engineer. So I worked in mostly media, and like I was talking about, like sir, you are talking about RAN radio protocol. हम जो हैं वो जो प्रोटोकॉल्स और जो मीडियाज यूज़ कर रहे होते हैं वो लाइक DSLR और DSR, VNAT और ऑप्टिकल फाइबर्स. तो मेरा ये सवाल था कि क्या रेडियो जो प्रोटोकॉल है वो हमारा टेलीकॉम जो हमारे पाकिस्तान में नेटवर्क्स हैं या हमारे जो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं इंटरनेट एक्सेस, वो लोग भी यूज़ करते हैं या नहीं? हाँ जी. और दूसरा मेरा ये सवाल था कि क्लाउड कंप्यूटिंग में, और ये जो आपने सारी इंफॉर्मेशन दी है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, क्लाउड कंप्यूटिंग में ये सारी टेलीकम्युनिकेशन किस तरह जो है वो अब हम इसको जो है ना कलेक्टिवली एक चीज इसका बना रहे हैं, इस ऑन द होल टेक्नोलॉजी को. हाँ, इसका पहले सवाल का जवाब ये है कि जो आपने बात की DSLRs की या ये सारे रैन और कोर जो है ना, ये मैं अगर उसकी डायग्राम गिव मी 1 सेकेंड और मैं आपको इसकी इसी पे बना के दिखाता हूँ, क्योंकि लेट्स मेक अ न्यू वन, क्योंकि ये जो मे बी यहाँ पे कर लेते हैं इसमें. तो ये जो लेट्स सपोज कि ये आपका रैन है, सॉरी माउस के साथ लिखना बहुत मुश्किल है, ये रैन है, ठीक है, ये कोर है, ठीक है. I'll just write C. ओके, और रैन और कोर के अंदर बेसिकली आपके बहुत से छोटे छोटे यूनिट्स हैं जिसमें आपने जिनका जिक्र किया, ठीक है. और जो फाइबर ऑप्टिक्स आप कह रही थी फॉर एग्जांपल, वो अमूमन लेट्स सपोज वैसे इनके दरमियान नहीं होता, रैन और कोर के दरमियान, बट
It's basically just something that connects them. ठीक है, so ये एक connection है, ये एक connection है. This could be fiber optics, this could be simple IP, could be anything depending on कि क्या उनकी deployment क्या है. Usually जो आपका telecom system है, that is composed of many small little things, small little applications जो run हो रही है. जो अभी सॉरी नाम क्या था, रिबा राइट, जो हमारी यहाँ पे इस वक्त इसको, हाँ रिदा ने अभी जिस तरह बात की कि चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए ना हमें पहले बिल्कुल टॉप से देखना पड़ेगा कि हम किस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं. अगर आप फॉर एग्जांपल किसी एक चीज़ को यहाँ से उठाते हैं, अब मैंने आपको बताया था एक चीज़ CU होती है, मैं अब 5G की बात कर रहा हूँ, आई एम सॉरी, मैं आई वुडंट टॉक अबाउट 3G बिकॉज फिर वो टर्मिनोलॉजीज बहुत डिफरेंट हो जाएंगी. आप उसको कोई भी नाम देते हैं, आप उसको ABC कहते हैं, XYZ कहते हैं, डजंट मैटर. अभी आपने जो नाम दिए ना सारे यूनिट्स के, वो ये छोटे छोटे यूनिट्स हैं. सो देयर समथिंग हियर, देयर समथिंग हियर, देयर समथिंग हियर. उनके बहुत अच्छे वेल डिफाइंड रोल्स हैं. जैसे दे आर मेंट फॉर समथिंग वेरी स्पेसिफिक. जिस तरह एक टर्मिनोलॉजी है, वो HLR की बात होती है, वो तो पुरानी बात है, लेकिन वो HMM एंड HLR, ठीक है, वो आपके कोर में बैठा हुआ है. ठीक है, इट्स बेसिकली डेटाबेस, उसमें यूजर्स का डेटा है, सिंपल टू अंडरस्टैंड. उसका एक कनेक्शन है जो कि आपके कोर के बाकी कंपोनेंट्स के साथ कनेक्ट हो रहा है, वो एक वेल डिफाइंड इंटरफेस के थ्रू हो रहा है. ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी स्पेसिफाइड हैं, बड़ी अच्छी क्लियरली डिफाइंड हैं कि कौन सी चीज़ इसमें क्या इंप्लीमेंट होना चाहिए, उसमें किस तरह से इंप्लीमेंट होना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं. क्योंकि कल को आपका ये पीस जो है वो हो सकता है नोकिया से आ रहा हो, और ये चीज़ आपकी जो है, ये पूरी चीज़ जो है फॉर एग्जाम्पल ये आपकी एरिक्सन से आ रही है. सो हाउ विल दे टॉक टू वन अनदर? दे कांट. The only way they can talk to one another is कि अगर आपने इनको एक तरह से इनका इंटरफेस बड़ा क्लियरली डिफाइन किया. एंड अगेन इंटरफेस फिर सिपरी इंटरफेस है या फाइबर ऑप्टिक है या IP बेस्ड है या whatever, you know, SCTP है, UDP है, क्या है, that is independent. वो एक कहीं पे स्पेसिफाई हुआ हुआ है कि क्योंकि ऊपर वाली लेयर्स जो है ना वो नीचे वाली लेयर्स पे मूवमेंट डिपेंड नहीं करती, करना भी नहीं चाहिए. सो जो अभी आप टर्म्स की बात कर रही हो वो मोर और लेस आर स्पेसिफिक थिंग्स जो कि या रैन में एग्जिस्ट कर रही हैं या कोर में एग्जिस्ट कर रही हैं. और अगर आप इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करो तो आप कह सकती हो रेडियो हेड पे है. रेडियो हेड जो है वो है जो आपका एक्चुअल खंबे के साथ जो चीज़ लगी हुई होती है ना, खंबा इटसेल्फ कुछ भी नहीं है, ये खंबा इज जस्ट स्केलेटन. उस खंबे के साथ आपकी यहाँ पे एक छोटा सा ना डब्बा सा लगा होता है, कुछ चीज़ लगी होती है, वो रेडियो एक्चुअली उसके अंदर होता है. और रेडियो जो है फिर वो सिग्नल्स जो है वो भेज भी रहा होता है और रिसीव भी कर रहा होता है, और उसने कुछ कंप्यूट करना होता है और फिर कंप्यूट करके उसने वापस भेजने होते हैं. वो जो हमने लेयर्स की बात की थी वो फिर एक गेम आ जाती है कि अच्छा इसके अंदर क्या हो रहा है और इसके अंदर क्या हो रहा है, और दैट्स अनदर स्टोरी. यहाँ पे फाइबर ऑप्टिक हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, बट देन फाइबर ऑप्टिक्स एक्सपेंसिव भी है, फाइबर ऑप्टिक्स की के डिस्टेंसेस के भी इश्यूज होते हैं. सो या दैट्स अनदर टाइप ऑफ लेट्स से स्टडी कि उसमें ये किस तरह से है. Does that answer your first question? Yeah, do you have something more specific? Sir, I have a lot of confusion, but I think so it's too late. I will ping you some other time if you will be visible and talk to me. Otherwise, session was very good and very informative, and um, we would like कि अगर आप दोबारा हमें एक और सेशन दें जिसमें हमारी थोड़ी सी कैरियर को थोड़ा बिल्डअप करने के लिए, थोड़ा सा हम स्टूडेंट्स को इन टेलीकॉम में, थोड़ा IT में कैसे हम अपने आप को ओरिएंटेड करें, किस तरफ हम लाइक मूव हों, क्योंकि हम सॉफ्टवेयर के होते हैं तो सम पीपल उनकी फील्ड जो है वो डाइवर्स हो जाती है. टेलीकॉम वाले सॉफ्टवेयर में आ जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि वो किस तरफ जो है ना मूव करें, किस तरह की उनकी जॉब्स हों. तो आई वुड लाइक कि अगर आप ज़रूर हमें एक तरफ एक इंफॉर्मेटिव मोटिव सेशन दें, सो इट वुड बी वेरी थैंकफुल, एंड it was a very great session with you, and I am very thankful to you, and over to you, Miss Rida Fatma. Amazing. If you raised a very good point, मैं भी वासिक सर से यही बात करना चाह रही थी कि जनरल एक हमें रखना चाहिए, क्योंकि हमें एक इनसाइडर के पॉइंट्स जब मिल जाते हैं, जनरली सब लोग बोलते हैं कि जैसे हमें सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन देनी है, टेलीकम्युनिकेशन देनी है, लेकिन they don't really know about what is happening in there. So we need a person from the inside to tell us that
what is really the game, what game is going on, and how should we proceed with our career. कौन से courses करने चाहिए, किस चीज के बारे में knowledge होना चाहिए, कहाँ किस तरफ जाना है तो हम अपने career में ज्यादा advance करेंगे. ये जो सारे जनरल टॉपिक्स है ना, इनकी अगर हमारे लोग जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, यंगस्टर्स हैं, जो इन फील्ड्स में जा रहे हैं, इनकी अगर काउंसलिंग हम दे दें तो बहुत हमारे लिए एक क्या कहते हैं अचीवमेंट होगी, क्योंकि ये जनरली यही चीज नहीं बताई जाती, इसी चीज की कमी है, बीच में ब्रिज नहीं है. तो we would like to arrange a webinar related to the basics of telecommunications and related to career, about how we can proceed in the career and all those things that's coming into our way. How can we like really think about the future, not just like stuck in the what is happening right now, but also we can predict about what's going to happen in future, and how can we proceed to increase our careers, and generally for entrepreneurs, for all of the generals. So we would like to arrange a webinar with you. Osama will be contacting you regarding that. And today's section was generally amazing. I got to know a lot of things which I never had heard of. So wonderful, it was amazing. Thank you so much. It served the purpose. My pleasure. Okay. My pleasure. Okay. So all of the participants, I would like you to fill the forms. Thank you for your patience, for being here, for continuously listening to the webinars. Since the webinar was so important, so it was so interesting, and it was just like their story. So I wouldn't like to interrupt it in the between, and I didn't say that time is over. I just didn't like it because it was very informative, and people was liking so much. It has really a basic common language, because it's difficult to make us understand the things that are really technical and top telecommunication, and make us understand the common people so that common people could get it. It's a difficult task to do. So it was really amazing. Thank you so much, sir. So participants, make sure to fill the form in order to get your certificates, and make sure to join us in the next webinar. We are going to inshallah soon arrange the webinar related to the careers, related to telecommunications, related to how you should proceed, related to what's the basics of it, so that you can proceed with our bootcamp as well. And thank you so much, sir. And those who want to leave can fill the form and leave. All the best, everyone. Take care. Thank you so much, sir. See you in the next webinar. Inshallah. Again, we are so grateful for you. Okay.